Hello, good morning, and welcome to this tournament. Hello, 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 check. Hello, 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 check. One, two. Hello, hello, hello. Test it. One, two, three, four. Hello, 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 hello. पुढे आगात जाय तो क्रॉस असताना नेमका Hello. Hello. Check, check, check. Check. Hello, check. One, check, check. रोल कॅमेरा चालू कर. मानव किती वेळ लागेल? हा कर चालू. राहुल तू पण चालू कर. Hello, 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 hello. 1, 2, 3, 4.
of Kundam, punch members, Kundagarwai, Nauti, please come for the inaugural function. Kiral. Ambre. So guest of today's honor, respected Mithil Lavekar, who is the president of Madhavkar Davekar Trust, along with him the Sarpanch of Kundam village, Mr. Dalmi, the stage artist, Dubira Kumar Nauti, along with the president of Sri Rana's punch members, Vishwas Varte, function in the hands of Mithil Lavekar. First match, it will be strong balls of Sangwai versus Ami Kunai. Please. And the toss has been won by Sakoi and elected to free. 1 minute, sir.
So what will you say about this tournament? Then on the match. मिथून बाबाचे टुर्नामेंट सदां बरें जाता. दिस इज द थर्ड टाइम वी आर कमिंग हियर, सो तेजेर कांय डावट ना. सो व्हेरी गुड. सांगला की मिथून खरंच सांगता आयकुपाक मेळटा आनी हांवें स्वताक टुर्नामेंटाक आसता की ताजो टुर्नामेंटाक कांयच कोणाचेर नासता. बरें ऑर्गनायझींग आसता. डिसिप्लीन म्हणटा आमी की टुर्नामेंट ऑर्गनायज करप आनी खेळप इजी आसता, पूण त्या पेक्षा एक डिसिप्लीन मेंटेन करप इज इम्पॉर्टंट आसता. तो आमचो मेन एम आसता ह्या टुर्नामेंटाक. तर पयलीं टॉस जिखून तुमी फिल्डिंग केला तर सो कॅप्टन, सो तुम्ही पयलीं ताणें टॉस जिखून तुमकां स्कोर. आमी एक्चुली बॅटिंगूच करपाचे आसले. सो अरावंड 7 ओवरींक 80 इज डिफेंडेबल हियर. सो आमी टार्गेट करताले 80 रन्स. So all the best and what to do for all of us. For the photos. मिक्स घे. So in this way, Sakwa won the toss and elected to field. So this is magic of Sailors. दोन्ही टीम्स घे पहिले, फक्त प्लेयर्स. हय प्लेयर्स. प्लेयर्स आणि आम्ही गेस्ट राहू न्ही रे. प्लेयर्स तुम्ही तर हाडिताला मरे. हय अशें रावंड घे, रावंड कर. प्लेयर्स राव. राव रे रावपाक काय ना. कंटिन्यू मरे. हार काढ आणि हे घाल. कोण ना तालिगांव असं. बी तसे काय ना नाही. हां पावर प्ले घालता बी सेकंड तशी काय ना मरे. करूया काल सकाळी आशिल्लो. अरे गोंया आतां 46 म्हळ्यार विचार कर.
जाल्ली आसा ते क्लायमेटाची आमकां हांगा 30 आमचे 30 ओके पॉसिबल जायना पॉसिबल जायना आमकां 30 आमचे हांगा चलता आमच्या भुरगेपणा म्हळ्यार 28 अशें एकदम 30 आमी फेस करूं शकता केन्ना व्हडल्यान मारता एक मंथ 19 सुद्दां सर ओके 19 आमी सामकी मरे आमी जेन्ना क्रिकेट सुरू केल्ली क्रिकेट 1977 फुडल्या वर्सा येता तुज्या 50 इयर्स जाता तेन्ना फक्त दोगूच म्हणजे आमी खेळले आम्हाला तो एक हातून दिसता पळयलो थंय हें करूं मरे So on behalf of Srihona Sports and Cultural Club, I welcome Babu Raikar, who has been just arrived over here. So Babu, you are most welcome over here. बरें केलें तुमी हांगा रावले ते वतान नाका नासली सारकी अशी हय हय हें आसा न्ही कप काडपाक लाया उदक अखिल गोय म्युन्सिपल आणि पंचायत लेवल टुर्नामेंट अशी ऑलरेडी जाल्ले आसा. आमचे मुखेल सर मिथिल बाब डवळेकर, त्याचे बरोबर आमचे गावचे सरपंच सर्वेश जल्मी कुणेकर, मोहनभाई कुणेकर, बाबू रायकर, स्टेज आर्टिस्ट नावती, पंच मेंबर विश्वास वर्ते, आमचे क्रिकेट बरो सिनियर प्लेयर उमेश भाई, माजी सरपंच दादा, तर आमच्या आयच्या मुखेल सर ऑर्गनायझिंग कमिटी लेगीत मागता की तांकां फूल ना फुलाची पाकळी दिवन तांचे स्वागत करचें. कुणा वाठाराचे सरपंच
सर्वच जल्मी हाका फूल दिवन तांचे स्वागत. कुणे वाठाराचे एका नावाजलेले असे आमचे मोहनभाई कुणेकार तांकां फूल दिवन तांचे स्वागत. सगळे काढून एकदम आठ रे. आमचे प्रतिसादात आशिल्ले बाबू रायकर हांकां जे आतांच तांचे पदार्पण जाल्लें आसा तांकां फूल दिवन तांचे स्वागत करचें. ना ना हांवें घेतले दुसरे क्लास. आमचे स्टेज आर्टिस्ट तशेंच बरे उतरे दिवपी आमचे नावती सर तांकां फूल दिवन तांचे स्वागत. कुणा वाठारांतले माजी सरपंच दादा हांकां फूल दिवन तांचे स्वागत. तसेच कुणा वाठारांचे पंच मेंबर वा विश्वास करते हांकां फूल दिवन तांचे स्वागत. माशे आशिल्ले आनीक सोशल वर्कर तशेंच क्रिकेट प्लेयर म्हण क्रिकेट मोगे म्हण उमेश भाई तांकां फूल दिवन तांचे स्वागत. कुणा वाठारांतले अशे एक्सपिरियन्स तशेंच आमचे मदले आशिल्ले जाणकार अशे वा वेंकटेश भाई तांकां फूल दिवन तांचे स्वागत. आनीक 2-3 फुलां. तशेंच हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता श्री रवना स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब हाचे प्रेसिडेंट मिथुन वैद्य हांच्या लागीं मागता की ताणें हे फूल स्वीकार करचे. बाबू रायकर हाचे लागीं मागता की ताणें मिथुनाक दिवन मिथुनाचे स्वागत करचे. सवर्ण स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब आणि मिथुन वैद्य हाणें जॉयंटली मेळून हो टुर्नामेंटाचे ऑर्गनायज केल्लो आसा. तशेंच ऑर्गनायझींग कमिटी लागीं मागता की ताणें हे जे टोकन फ्लॉ आसा ते आयचे आमच्या मुखेल सोयरे मिथुन वैद्यकर हांकां दिवचे. कुण वाठाराचे सरपंच सर्वेश जल्मी दोग जाण रावाले. मोहनभाई कुंडयकर सोशल वर्कर बाबू रायकर स्टेज आर्टिस्ट आमचे नावती सर
पंच मेंबर विश्वास फडते. माजी सरपंच दादा. उमेश भाई. तसेच आमचे जाणकार व्यंकटेश भाई. सगळ्याचे वेलकम. तसेच टोकन ऑफ लेवल आसा. तर आजचो टायम काडना कारण पयली मॅचीचे दोन्ही टीमी रेडी जाल्ल्यो आसात. तर हांगा आशिल्ले आमचे सरपंच बाब सर्वेश सलमी हाजे लागीं मागता की ताणें 2 उतरां सांगचे. तुमकां नमस्कार करता. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार म्हाजो. आयज रवनाथ स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब हांच्यांनी आयोजीत केलेल्या ह्या टुर्नामेंटाक आमच्या वांगडा आसा माधवराव धवळीकर ट्रस्टाचे अध्यक्ष मिथिल धवळीकर सर. तशेंच कुणय गांवचे आमचे भाडकार कुणयकार. तशेंच आमच्या वांगडा आसा बाबू रायकर भाई. तशेंच नावती सर आसा आमच्या वांगडा. तशेंच दादा आसा आमच्या वांगडा. तशेंच म्हाजे वांगडी पंच मेंबर बाब विश्वास फडते. आमचे गांवचे नागरीक उमेश नायक. तशेंच ज्येष्ठ असे नागरीक व्यंकटेश गावडे. ते फर्स्ट विकास कितें तरी येयलेलो ते टायमार. म्हणल्यार अशें आसता की तो जेन्ना टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता तेन्ना सगळी म्हणल्यार जे कडेन एप्लिकेशन दिवची पडटा जावं पुलिसेक जावं आनी डेप्युटी कलेक्टर हांची सगळी परमिशनां तो घेता. आनी म्हणल्यार तुमी चिंतचे की कितले टायम जालो तो कंटिन्यू हे करीत आसा. आनी बेश्टोच म्हणल्यार सांगचे म्हळ्यार सक्सेस जायना मिथून तेच्या फाटल्यान आसा म्हणून हो सक्सेस जाता टुर्नामेंट. आनी दुसरें सांगचें म्हणल्यार जशें आमचे गोवा राज्याचे सीएम म्हणटा की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय अशें जेन्ना म्हणटा तेन्ना म्हाका तरी दिसता की रवनाथ स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब जो आसा तो स्वयंपूर्ण म्हणटा जशें स्वयंपूर्ण गोंय जावं आत्मनिर्भर भारत म्हणटा तशें ते प्रमाणे हो क्लब स्वयंपूर्ण जाल्लो आसा. कित्याक हे सांगचें म्हणल्यार जेन्ना आमी पळयता की टुर्नामेंट जाता तेन्ना खुबशे डोनेशना खातीर वयता पूण मिथुनाचो क्लब जो आसा तो केन्नाच डोनेशना खातीर केन्नाच कोणा कडेन मागना जावं हें करिना. हेच तेचें एक मुख्य म्हणल्यार सांगचें म्हणल्यार. कित्याक अशें दिसता की बरें दिसता की आपल्या स्वताच्या मेहनतीचेर करता आनी केन्नाच भुरग्यांक फाटीं सरपाक दिना. केन्नाय क्रिकेट आसलें कितें टुर्नामेंट आसलो चला तुमी फुड्या कितें ट्रॉफी जाय कितें चला फुड्या अशें करता. खुबशे अशें आसता की जेन्ना कोणाच्या शेजाऱ्याच्या घराक एक 56 म्हणल्यार 56 इंचाची टी व्ही हाडली तेन्ना सायडीचो म्हणटा हांवें हाडूं जाय आशिल्ली ती म्हाका जळटा. पूण मिथून तेन्ना कसोच जळना सांगचें म्हणल्यार. भावी आमदार सदांच म्हणटा हांव आनी समाज सेवक न्ही तर समाज सुधारक अशे आमचे
बाब मिथिल ढवळीकर, म्हजे इश्ट आणि सदांच जांचो आधार सामाजीक कार्यान सगळ्यांकूच मेळटा अशे बाबू रायकर, आमचे गांवचे जमीनदार मोहनबाब कुणेकर तथा जिवाजी कुणेकर, त्या उपरांत गांवचे सरपंच जे उत्तम वक्ते आसा, तुमी आतांच तांचें भाशण आयकलां, ते सर्वेश जल्मी, आमचे बऱ्यापैकी गांवचे खेळाडू अजुनूय ज्यांनी आपली उर्जा तशीच दवरल्या, तुमी पळयल्यात ते विश्वास फडते, ते उपरांत उमेश नायक आसा, व्यंकटेश कुवेलकार, ज्याचो उदळ उल्लेख केला आमी की जो रिटायर्ड जाले उपरांत चड चार्ज जाला आनी बरें काम करता, गांवांनूय बरें काम करता, उद्योग क्षेत्रांत बरें काम करता, भुरग्यां खातीर बरें काम करता असो आमचो व्यंकटेश. त्या उपरांत दादा जो ह्या गांवचो आदलो सरपंच, आमचे निलेश नायक, ज्यांच्या उल्लेखा शिवाय म्हाका दिसता म्हजें उलोवप पूर्ण जावचें ना. त्या उपरांत मिथून वैद्य जे ह्या क्लबाचे सर्वे सर्वा आसात. त्या उपरांत खूब जाणां सांगा, अजय आसा, आनंद आसा, आमचो मिस्टर नायक गव्हर्नराचो, गौरेश आसा फट्टे, तर सॉरी गौरेश सावंत, ज्याचें नांव सबंद गोंया भायर खबर आसा पूण म्हाकाच मातशें घेतना आडखळटा हांव. तर आज हांगा सांगपाचें म्हणल्यार सरपंचान सांगलां की हो जो रवळनाथ स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लब आसा तो आत्मनिर्भर आसा म्हणून. आत्मनिर्भर म्हणजे स्वयंपूर्ण आसा, तांकां दुसऱ्याच्या कोणाची मदत लागना अशें सरपंचान सांगलें. पूण सरपंचाक हांव सांगूं सोदतां, सरपंच जर असो फक्त इंडस्ट्रीन भोंवत आमच्या जाल्यार म्हाका दिसता असले 5 टुर्नामेंट सहज करूंक शकतलो. तेन्ना जमता जाल्यार सरपंचान म्हजीं उतरां मनार घेवचीं. त्याच प्रमाणे हांगा दर वर्सा हे आमी कुणेकर म्हणटा पळय कितलो स्वाभिमान आमचो उबो जाता. फाटल्या 2-3 म्हयने पयलीं पुण्याक एक म्हाका मनीस मेळ्ळो, ताचें नांव सुबोध कुंडयकार. तर ताका कुणेकर म्हणलें नाही आमी मूळ गोव्याचे म्हणलो, पूण बाकीचे ताका कांय खबर ना. आपूण म्हणलो कांयच नकळो. म्हणजे कुणेकर हे फक्त गोंयानूच पसरल्यात अशें न्हय, तर सबंद जगभर कुणेकार आडनांवाचे लोक आनी कुणेय मातये कडेन संबंद आशिल्ले लोक आसात हें म्हाका हांगा सांगपाचें आसा. 5 वर्सां जालीं आमी कुणेकार चषक हांगा खूब दबाज्यान, खूब नेटान, खूब उमेदीन, खूब उत्साहान जाता. तर आमकां जर कितेंय सांगपाचें आसा, आमचो जो पळय आमदार आसा, लोकप्रतिनिधी आसा, तो इतलो प्रबळ आसा, इतलो कापासदारीचो आसा की त्या बद्दल हांवें कोणाक सांगपाची गरज ना, कारण म्हज्या परस बाकीच्यांक ती गजाल चड खबर आसा. तर हांव म्हजी जर कितेंय कामां आसत जाल्यार हांव पात्रांवाक सांगत ना, हांव मिथिल बाईक सांगतां आनी म्हजी सगळीं कामां जातात बऱ्या भशेन. हय, म्हणटा आतांय हांव मिथिल बाईक परतून हांगा सांगपाक सोदतां की 5 वर्सां जालीं आमी कुणेकार हांगा खूब नेटान हो टुर्नामेंट चलता. तुमी निवडून येना फुडें पयलें काम करपाचें म्हणजे सामकें पयलें की ह्या ग्रावंडाक जें स्वरूप जाय ग्रावंड म्हणून तें तुमी करचें. हय, आनी फुडल्या वर्साच्यान हांगा लेदर बॉल टुर्नामेंट सुरू जावचो की म्हाका दिसता आतां मिथुनूय कंटाळो आसतलो टेनीस करून. तेन्ना हें श्रेय मिथिल बाबान घेवचें. पात्रांव आमचे बरोबर आसात, पात्रांव आमची कामां करतलोच, पूण प्राधान्य क्रमान मिथिल भाईन हें काम करचें आनी सगळ्यान पयलीं करचें. मिथुनाचें जें मनोगत आसा तें हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की हांवें म्हणलां आतां की तो टेनीस तो कंटाळ्ळा, पूण ताणें सांगलां फुडलो जो टुर्नामेंट हांगा जर आपणें केलो जाल्यार तो लेदर बॉलूच जातलो आनी दुसरो आपूण ते टेनीस आनी करपाक वचचो ना. तर मिथिल भाईचेर आनी थोडोसो प्रेशर हांव घालतां की तुमी आमचेच आसात, तुमी आमचे लोकप्रतिनिधी जाल्ल्यानूय जमा आसा, तर आतांच सुद्दां हें रखणें काम करपाक सुरवात करपाक हरकत ना. हय, म्हणजे माती घालून सादारण एक पीच तयार करून खेळपाक मेळटा अशें तांणी करचें. आनी हांव चड उलयना कारण हांगा आनीकूय वक्ते उलोवपाचें आसा. निलेशूय कितें करता, निलेशान म्हाका सांगलां कळ्ळें की साखर गोड लागता म्हणून तें कितें खायत रावप न्ही, थोडीच खावपाक जाय अशें. देव बरोबर नावती सदांच म्हणटा की कितलो जर टायम जालो कोणी कितें जालें जाल्यार नावती सराचे 2 शब्द आयकल्या बद्दल ते म्हाका तरी मनान पडना. तर देव बरें करूं नावती. तर फुडें आमचे
आयचे मुखेल सोयरे आतां नांव ते सरान सांगलें की तुमी ताका समाज सेवक म्हणप ना, तुमी ताका समाज सुदारक. सो आज पासून हांव ताका समाज सुदारक म्हणटा. तशेंच ताणें म्हणलें की आमचो तो भावी आमदार सुद्दां म्हणपाक म्हाका कांयच फाटीं फुडें रावपाचें ना. तर आमचे आतां तुमचे मुखार आमचे भावी आमदार मैथिलभाई ढवळीकर तुमकां 2 शब्द सांगतले. नमस्कार. ग्रामदेवी श्री नवदुर्गेक वंदन करून आज श्री रवळनाथ स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब हांच्यांनी आयोजीत केल्लो आमी कुणेकार चषक 4थें एडिशन आज सुरवात जाता. आतांच ताजें रितसर आमी इनॉग्रेशन केलां आनी ल्हानशा ह्या फॉर्मल फंक्शनाक म्हजे बरोबर उपस्थित गांवचे सरपंच बाब सर्वेश, तशेंच गांवचे ज्येश्ठ नागरीक बाब कुणेकर, एक समाजसेवक तशेंच कलाकार बाब दुर्गाकुमार नावती, पंच बाब विश्वास, तशेंच समाजसेवक बाब रायकर, उपस्थित आमचे इतर सगळे गांवचे नागरीक, सगळे ऑर्गनायझर्स आणि जमिल्ले सगळे प्लेयर्स, बाब सर्वेश आणि नावती सरान आतांच कुणेकार चषकेचे फाटले 3 वर्सां किंवा 4 वर्सां कशी जाली हें थोडक्यात सांगलां. आणि तशेंच बाब मिथुनान क्रिकेटी खातीर कितलो वावर केला, कितले प्रयत्न केल्या तें सगळें आपल्या उतरांनी सांगलां. त्या खातीर बाब मिथुनाचें चडान चड हांव अभिनंदन करता. कारण याद आसा जेन्ना हांवें सोशल फिल्डान एंट्री घेतली तेन्ना पयलें म्हणजे फंक्शन म्हाका दिसता क्रिकेटींतल्यानूच चालू जालां. म्हणजे स्टेजीर सुद्दां भाशण दिवप किंवा एक इनॉग्रेशनाक एक आपोवप तें क्रिकेटींतल्यानूच जालां. आनी गेलीं कित्येक वर्सां बाब मिथून आसत किंवा कुणय पंचायतीन चडान चड म्हाका दिसता टुर्नामेंट हांगा जाल्या आनी तातूंत प्रत्येक टुर्नामेंटान एक भाग घेवपाक मोठो आनंद जाता. कारण कुणय वाठारान एक प्रत्येक घरान क्रिकेटर आसा. म्हणजे आमी सालसेतीन गेले जाल्यार थंय फुटबॉल जशें मोठ्या उत्साहान खेळटा तशें हांगा कुणय आमचे क्रिकेटीचे प्रेम आनी क्रिकेटीचो मोग आसा तो आनी खंयच दिश्टी पडपाना. कारण प्रत्येक वाड्यार बरे क्रिकेटर्स आसा. म्हणजे अशें न्ही की फक्त आपल्या घरानूच भायर आंगणान खेळटा अशें ना, पूण बरे खेळपी आज गोंयभर तांणी नांव कमयलां. गोंयानूय न्ही भायर आज नॅशनल लेवलार टेनीस सुद्दां खेळून आयिल्ले क्रिकेटर हांगा आसा. त्या खातीर तांचे सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता. त्याच बरोबर रवळनाथ स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब गेली कित्येक वर्सां जाली कुणय वाठारान क्रिकेटी खातीर आसत, इतर स्पोर्ट्स आनी कल्चरल एक्टिविटीज मागीर ते घुमट आरती आसत किंवा इतर क्षेत्रांत भरघोस अशें काम करता गांवच्या बऱ्या खातीर. म्हणजे आतांच जेणी म्हटलें समाज सुदारक हांव न्ही, पूण अशें जेन्ना क्लब मुखार सरता त्या क्लबाक एक ल्हानसो आदार दिवन गांव सुदारपाक किंवा समाज सुदारपाक एक म्हजो थोडोसो वांटो आसता. पूण मुख्य श्रेय अशा क्लबांचें आसा जे क्लब गांवच्या संस्कृती खातीर, कल्चरा खातीर किंवा स्पोर्ट्सा खातीर सदांच वावरत आसा. त्या खातीर रवळनाथ स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबाचे सगळे मेंबर्स जितले हांगा उपस्थित आसा, काही जण उपस्थित रावूंक शकले ना, तांकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता. फुडले गेली 3-4 दीस हो टुर्नामेंट जातलो. भरघोस असो तयारी बाब मिथून आनी सगळ्या साथीदारांनी केल्या. म्हणजे आयल्या बरोबरच एक खेळच्या पयलीं पळोवनूच इतलें बरें दिसता की हांगा येवन मॅची पळोवपाक मोठो आनंद सगळ्यांक जातलो. त्या खातीर परत एकदां सगळ्यांक शुभेच्छा व्यक्त करता. 3 दीस बरे क्रिकेटींग स्पिरिटान, कारण आमी क्रिकेट म्हळ्यार जेंटलमॅन्स स्पोर्ट्स असो म्हणटा, त्या खातीर सगळ्यांनी बरो खेळ हांगा दाखोवचो. सगळे ऑल गोवा टिम्स हांगा पार्टिसिपेट जातले. कारण ते जेन्ना येतले तेन्ना आमच्या कुणय गांवचें नांव सगळ्याक पावतलें. त्या खातीर बरो टुर्नामेंट जसो फाटले 3 वर्सां तुमी घडोवन हाडला, 4थ्या वर्सा मोठ्या समाजान तुमी घडोवचो. सोपयता आसतना जशें बाब नावतीन म्हटलें, नक्कीच ग्रावंडाचो विशय हो ज्वलंत आसा आनी खूब म्हत्वाचो आसा. म्हूण कशें आसता सगळें जुळून येवपाक जाय. काही जे लिगल सोपस्कार आसा, कारण आसा तितल्याच पुरतो ग्रावंड करपाक तितले कश्ट ना, पूण बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचो प्रयत्न
आमचे आमदार सदोदीत करत आसा आनी मुखारूय बरें स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाचो प्रयत्न आसतलोच. सगळे जे लिगल गोश्टी आसा, काही जाग्याच्यो गोश्टी आसा त्यो सोपस्कर पुराय करून नक्कीच जाता तितल्या बेगीन ग्रावंडाचो विशय सुटावो करपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो अशें नमूद करता. पूण हें चालू आसतलें, पूण केन्नाच क्रिकेट किंवा स्पोर्ट्स हांगा बंद जावपाक दिवं नाका. कारण स्पोर्ट्स हो प्रत्येकाक एकठांय करून दवरता, प्रत्येकाक एक आपुलकीचें नातें तयार करता. त्या खातीर स्पोर्ट्साक सदांच मुखार व्हरपाक, कसलोय स्पोर्ट्स आसूं, क्रिकेट आसूं किंवा इतर खंयचोय स्पोर्ट्स तुमी खेळटा तेन्ना तो मुखार प्रोत्साहन दिवपाक, ताका प्रमोट करपाक सगळे आमी एकठांय रावया अशें नमूद करता. आनी परत एकदां सगळ्यांक शुभेच्छा व्यक्त करता आनी म्हजी नोंद हावती घेता. धन्यवाद. देव बरें करूं बाब, नितीन बाब. तर आनीक एक प्राऊड मोमेंट जो आमी जेन्ना जर्सी इनॉग्रेशन केल्लें तेन्ना मातसो तो आमचो करपाचो उरलो. तर श्री रवनाथ स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब हाजोच एक मेंबर म्हण, प्लेयर म्हण आमच्या आज गोंयच्या लेवलाक पावल्लो आसा. अंडर 14 हे जे गोवा टीम सिलेक्शन आसा त्या हितून तो सिलेक्ट जाल्लो आसा. तेजे वय अजून पर्यंत 13 वर्सां जाल्ले आसा. प्लस ताणें ऑलरेडी तो टेस्ट मॅच खेळून आयिल्लो आसा. आमचे मध्ये आता तो उपस्थित आसा. तर आयचे आमचे मुखेल सर प्लस जे सगळे माचयेर आसा तांचे लागीं मागता की तेणी सगळ्यांनी उबे रावचे. आनी तो कितले ल्हान सुद्दां आसा जाल्यार ताचे जे लेवल आसा तो ऑल गोवा लेवल पावल्लो आसा. तर आमचे मदींच आशिल्लो 13 वर्साचो बाब प्रथमेश गोपीकांत नायक हाका हो पुरस्कार दिवन ताचो मान आनी मातसो वाडोवचो अशें हांव सगळ्या लागीं मागता. तर हो श्री रवनाथ स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब हाजे वतीन हे प्रथमेश गोपीकांत नायक हाचो ल्हानसो मान. तरी आसतना आतांच मॅनेजिंग कमिटी तसोच मेन जो प्रेसिडेंट आसा श्री रवनाथ स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब हाणें अशें नमूद केलां की हे प्रथमेश किंवा आनी कोणी जर प्लेयर जर असो फुडें पावता, स्पेशली प्रथमेशात आनी फुडें पावपाक जर कसली हातभार जाय जाल्यार श्री रवनाथ स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब सदांच ताच्या फाटल्यान आसतलो. तशेंच तरी सुद्दां जर कमी पडटले जाल्यार आमचे भावी आमदार मिथिल सर हेय तांकां सपोर्ट करतले अशें नमूद करता. आनी हो आयचो जो आमचो इनॉग्रेशनाचो प्रोग्राम आशिल्लो तो हांगाच सोंपलो असो जाहीर करता. तर आतां आमी थोड्याच वेळान आमच्या आयच्या टुर्नामेंटाची पयली मॅचीक सुरवात करतले. So once again, good morning, and we'll start the first match of this today's session. That is between Strong Boys of Sakwai versus Ami Gunaikar. In that, Strong Boys of Sakwai has been won the toss and elected to field. So I request our both match referees, Punya Palkar and Rupesh Naik, to see the further things, and also request both the teams to send a 12th or an extra person in the commentary box.
So in the meanwhile, one more of our guests come, the commentator, Mr. Harish Chorankar has been arrived over here. So I welcome him on behalf of Siravana Sports and Cultural Club. So I request Mr. Mithun Vaid to give him a warm welcome. He also witnessed the President Cup. So I request Mr. Harish Bhai to come over here and take the charge of the commentary. Toss on by Sakwari Strong Boys of Techno Field first, and here comes the first ball of Ami Kunekar Chashak. Sohail, nicely bowled, very nicely, and he's got immense experience. I always say in the com box, whenever he is around, he just charges in. Very important to bowl and have a good start in the power play overs, and that is what Sohail does most of the time, picking the wickets up the order. He's a strike bowler, and he'll be always bowling to bowl just around the wide line of off stump. Only the two fielders kept on the leg side, long on and square leg. This time just sliced it towards the backward point region, gets a quick single. And you can see both this line almost similar sort of delivery, just outside the line of off stump. So he's making the batsman to play on the offside. So if you are trying to play on the leg side with the pace of Sohail that he has, he's got a little bit extra pace, extra nip. It's not going to be easy for the batters to hit the ball on the leg side. That's missed the stumps by just a slender margin. Missed that off stump. Trying to whack the ball on the leg side, gets the inside edge, beating the keeper, beating the third man in the final leg region, gets the first boundary. This is a quick outfield, almost a practice wicket there behind. So once you pierce that wicket keeper, you might just get a boundary behind. First boundary, not the best of the shot. Yeah, once again trying to hit the ball too hard, running down to the third man. Good chase by the fielder there, and kept the ball in play. That's very important. Looking for the third one. Run out opportunity on the cards. Yes, the throw was slightly wide. If the throw was better, he had to come little bit, maybe a couple of steps in front and has to collect it. And by the time the batter made it easily possible at the striker's end. Score moves on to 8. That's why we always say this is one of the looked out tournaments in entire Goa. Everyone wants to love to come and showcase their performance here with full potential. And as well, goal, another one. Even the batter was shuffling. He just kept focused on the good length areas, just around the back of length. Batter trying to go across the line. Extra pace from the bowler, extra bounce, going straight into the hands of Riaz. शानदार गेंदबाजी यहाँ पे शुरुआत करते हुए तो इस तरीके से बहुत सटीक लाइन और लेंथ के साथ शुरुआत की है पहले ओवर में. That's lovely, wonderful bowling. All the 6 balls right around the off stump area, the corridor of uncertainty, and most of the time beating the bat comprehensively. So we are done with over number 1. The score is 8 without loss. So Strong Boys versus Ami Kunekar. So bowling home around the wicket. That's in the air. Should be an easy chance. And taken in the short extra cover. Well taken. And the wicket here. First wicket going down.
अक्षय out नाही. So Akshay is the one. He got a boundary and 3 runs, 7 individual runs scored by Akshay. So Nandesh, they play a lot of cricket in Sakwal. They recently at Sakwal Big Bash, Talim Champions League. Nandesh was the icon player and they were the runners-up. So Nandesh bowled really well. He was the player of the series, Nandesh there, and did well in terms of picking wickets as well as scoring a lot of runs. Many new inclusions in this Sakwal Panchayat. Some key players are missing in this side. Might see them soon. They will be landing in Goa, both the brothers. Nicely bowled, very nicely. They are doing the simple things right, the basics right. Just bowling around the off stump and making the batters to just miss many of those balls. Safraz, Nawaz and Shakil, both superstars are missed here. They are in Dubai playing cricket. So they will be flowing back to Goa. And once again, very nicely bowled, angling the ball from round the wicket. Looks as if wide, but it is ending up well inside the guideline. Well inside the guideline. So excellent bowling. That's the experience they have gained playing a lot of cricket and regular cricket. Lovely, beautiful bowling. You can see that the batter shuffle and still follow the batter outside the line. He's not trying to bowl straight because they are not looking for wickets here. They are making the batter frustrated with those line and making the batters make the mistakes here. It's a good piece of bowling. Second over also started well. Not a single run on the board so far of the first 4 balls. The wicket of the very first ball and 3 dot balls in a similar line, similar fashion. Yeah, another one. Another one. He's looking for wide there. It was well inside. Very close to the bat. Exceptionally good bowling here from Nandesh. Same angle and the same line that he's been bowling. Batter is trying to just go across. And that's a maiden over. Can you believe it's a maiden wicket over here? The second over. All the balls are just going straight in the hands of the keeper. A wicket of the very first ball in the short extra cover. Wonderful bowling from Nandesh as well. Backing Sohail. So end of 2, it's 8 for 1. Sohail होतं. So Sohail comes into bowl the third over. And now the fielding restrictions have eased off. 4 fielders, 3 of them from the point to the third man on the offside, 1 to the short fine leg. This one was full toss, should have been taken for a few runs there on the leg side. And whenever you get full toss on the surface like this one and quick outfield, you have to pick the gaps and get those boundaries. Just into the first game. 7 overs games here for Rami Konika Cheshire. Very rarely seen the first round games 7 overs or 8 overs. That's nicely played. Swivel on the leg side. The fielder giving the chase, I think, is Dilip, covering all the region from the square leg towards the fine leg region. Dilip feeling well, throwing it straight to Riaz, and that's a couple of runs. So what's the score to 10? Still persisting with that. So batters have to do something different. They just cannot compile dot balls here on a regular basis. Perfect, perfect, good pace, and right in the block wall, a wide-ish blocker. That's what your speedster should be performing like this. Second over for Sohail, and he's still steaming in. Not easy. These are very hot conditions here, and under these humid conditions, you are just sweating out, and he's still firing it in. Still bowling with a lot of pace. So that's what the captain's delight it is.
when you see your fast bowler steaming like that. That's it, straight back. Just a little late reaction from Sohail. That might be a couple of runs. Well, you cannot blame the fielder. The outfield is a little bit bumpy here, so you got to be safe fielding approach the first and try to protect the boundaries. That is what the fielders need to do and should look to do. 12 runs on the board. Just one boundary so far. They're searching for the second boundary for quite a long time. Cracking Yorker. Absolute peach that one. Trying to whip the ball. Will get a single run. It was almost scratching onto the off stump, getting the bottom of the bait, and a single taken. So not much of excitement as far as the runs is concerned. The bowlers are having a good time. They bowl in the right areas and they bowled spectacularly well. This was also on the leg stump. Well fielded. Very nicely done. If it was going past him, it was a boundary. Abu feeling that in the short fine leg and saving the boundary. So it's just going to be singles. So we are done with 3 overs here. The score is 14-1. So in comes Nandish back into the attack. So I think 2 bowlers are getting the bowl 2 overs each, and remaining 3 bowlers 1 over each, so that make it 7 overs in the innings. If it was 8 overs, maybe the third bowler could have got 2. So that's how the calculation goes in tennis ball cricket. But 7 overs is quite a good lengthy innings, lengthy match. Nicely done. Nicely pushing the ball inside out in the covers region, and a slight fumble. Might get a third one as well. Just took it eyes of the ball as the batters were looking for the third one. Riaz very frustrated, and rightly so. The fielder should have just collected the ball and threw it back. Too much of time taken over there. Nandesh is bowling so well. So fielders should back the bowlers the way the bowlers are bowling at the moment with good line and length. Another one. That's a chance. That's a chance. There's a man down there. Straight up. I think it's Deepak Patra who takes it very nicely. He's the best fielder in Goa at the moment. Yeah, undoubtedly amongst the top 3. If you rate as far as the number of points is concerned, I think Deepak Patra is one of the finest and the quickest around nowadays. So out it is. The second wicket falls down at the score of 17. So another batter comes in. Looks like the left-hander has come on strike. Saish has come in at number 4. Rocked here by 2 wickets. Ami Konekar struggling at this stage on just 17. Smacking the ball on the leg side. Sohail is fielding there. Fielded well. Good throw. Is backing as well. Good backing. It's what you require. Some younger legs as well required on the fielding. Almost like elasticity and the sprints that you see from some of the players. Because here it's very difficult. Once it goes past the fielder or anyone who collects, the ball just races on. Very quick infield and outfield. Well bowled, well bowled, well bowled once again. Look at the shuffle there. The batter has shuffle.
And he still followed and angled the ball away. Never targeted the stumps. Very smart. That's the experience that comes at the forefront, having played a lot of cricket this season. Nicely played. Very nice. Good shot. Racing away towards the boundary. Nothing wrong with the ball there. Maybe touch a little fuller. And he played an inside-out shot. Wonderful drive. Strong one. Gets the second boundary after a long time. So marks the end of over on a pretty good note here for Amit Konekar. We are done with 4 overs. The score is 22 for 2. And in comes Arun. Inside out, lovely shot, beautiful. Great hands there, free flow of the hands. Inside out, goes towards the extra cover boundary for 4 runs. And that puts the pressure right back on the bowler straight away in the very first ball. Score rapidly moves on to 26. So last couple of balls, you see a couple of boundaries. So little bit of momentum here coming in Amit Konekar's favor. They allowed the bowler to hold the line and length in the first 2 or 3 overs. Now they understand we need to accelerate here. Accelerate a bit. You just cannot concede too many dot balls. Cross the line and well fielded and goes for the boundary. Is it? Looks like. And back-to-back boundaries. Going across the line, smashing it hard and picking under the boundary. And looks like there is a fielding change prompted here. There's a couple of times that he has misfielded and that has easily gone in the hands or the head of the keeper and the skipper as well. So they immediately change him. So Arun has been put under pressure. He's not been allowed to bowl his line. 1 over the extra cover region, 1 across the leg side in the deep square leg region. Both exactly in the opposite direction shots, both the boundaries. Now what is it going to respond with? A slow ball, slow off cutter or the Yorker. And that's well fielded, very well fielded. The ball is trying to follow wherever the fielder is. He was in the square leg, the ball went over there, he was in the third man, the ball still follows him. This is what happens many a times in the game of cricket. Well, you don't want the ball to come to you sometimes after a couple of fumbles, but that's how the game of cricket progresses. It happens to many of us. Looks decent now. Still into the 5 over mode, and you've got to just accelerate a touch bit here. Move on the canter. That's lovely line. Much better. Just inside. Well inside. It was clearly evident it was well inside the guideline. You feel as if it is outside, but I think the batter also can have a look at the replay as well. It ended up well inside the guideline. So well bowled here from Arun. A dot ball, couple of boundaries, a single, a dot ball. You can see it still follows. There's no chance of a run. So they have learned it. Even if the batter shuffles, they are not changing their line. They are bowling slightly wideish because they have got that extra guideline just outside, so they can target that guideline. Just a little shift. Good thinking here. They are definitely thinking very nicely on this field. Not too many boundaries, not too many sixes. In fact, not a single 6 so far. 4 boundaries in this innings. We are into the 5th over.
Lovely. Slower off, got a leg cutter in fact. Pitched and went away. So good comeback here from Maroon after, in spite of being hit for a couple of boundaries the first couple of balls. We are done with 5 overs. The score is 31 for the loss of 2. आप कौन सा टेनिस क्रिकेट और किधर है टेनिस क्रिकेट वो तो हाँ वो मालूम है घरों को फोन किया था कैंडिडेट बस में और Abu comes in. Is the best bowler, just the best bowler in the Umar Boys Mormugo Taluka tournament, where all the players have registered themselves from the Mormugo Taluka, and now Abu is getting his share. He bowls really well with his change of pace, pace off, pace on sometimes. So let's see how he goes here. Good that they are giving exposure here for many new talent from Sakwa region. Wonderful to see. That is what a side like Strong Boys from Sakwa has been thinking about doing. That's inside out. Should be a chance. Oh, that's an easy chance that has been dropped. He reached there. He reached there. Once you reach there, you have to take it. A mistake in the field. And Abu should have got a wicket of the very first ball. Ball the slow off cutter. Better edge that ball, sliced it towards the touch shot super cover position. So Abu has got ability to bowl the slower off cutters and leg cutters, and he started with that off cutter against the left-hander. So now let's see what he is going to do against the right-hander. So it will be different sort of thinking and approach here from Abu. Riaz has gone from the keepers to the short tournament position. Lovely bowling. Oh, that is bad luck. There is bad luck there. Well, Riaz trying to get his hands, and it just beats Riaz as well as no chance for Sohail, and runs down for 4 runs. Dilip and Riaz having smiles exchange, understands that bowler has done exceptionally well in beating the bat, but here it's difficult behind the wickets, very difficult. You got to be really quick and fast. The bowler sometimes changes the direction, deviates a bit. So the batter is retired out. Yes, retired out. So many dot balls consumed here by Shubham in his innings, and that's prompted the management here to get him out, send someone new in. Slow leg cutter, well bowled, off cutter, leg cutter, all the talent here on display here. That's what I say, that they have learnt it. And they are bowling it exceptionally well here in the first game here against Tommy Konekar, Strong Boys Sakwar. Smashing it for a biggie. Looks like he has picked it and picked the bones out of it for a maximum. The first 6 of Tommy Konekar Chashak coming from the bat of right-hander Karthik. This was right in the arc, and he swings away very nicely. And great pickup, great lift, good distance. So first 6 coming straight in the 6th over. 42 the score. 42 the score. Inside edge gone down. Edge there inside and dropped down by the keeper behind. 2 chances dropped in Abu's over. The first one to the left-hander. It was in the short sweeper cover position. This time keeper dropping the chance. Could have picked up 2 wickets. Well bowled so far. This time also he drops it. And he misses the direct hit. Misses the direct hit as well. So it's not going right for Abu. And
is created 3 chances in this over. All 3 have been dropped by the fielders, and really feel sad sometimes for the bowler. You bowl so well, so heartily, but you are not being helped here on the course. 6 overs we are done with, and the score is 42 for 3. So in comes Putti. He was picked up in the Goa squad for the President's Cup for in the under 23 category, and along with Nagbhushan Gaokar. So some talent there in this boy, and in terms of more ability in batting and more ability in fielding. Now what happens is we are playing in the panchayat and the taluka levels or the municipality level. So you got to search for the 5th option. So he comes as a cushion there as the 5th bowling option. This should be down. No, that's once again falling short of the keeper. So what has happened over there earlier? The keeper was standing little bit 2 steps in front. That time the ball had got an extra bounce and gone quickly to him. So Riaz is standing a couple of steps behind, and the ball shots right in front of him. But still they are controlling this game very nicely. Here we are into the 7th over, and the score is just 42. In the air, Deepak Patra takes it easily. He is a fine fielder, and he is the best one. The out has been signaled. There is a man of Ami Konekar, and Saish has to go back. He tried to go downtown, trying to smash it hard, and it was Deepak Patra at the long off, waiting to pouch it very nicely. Safe hands, live wire on the field, and you got to say that 99% of the time he's going to take some difficult chances. 42 for the loss of 4. Just 4 balls left here. So Putti gets the wicket. See many new faces in the Sakwa team. I think Sunil has been missed. Dilip is still there. Maybe Sunil is not available today. But when Shakil and Sarfraz comes in this Sakwa side, they will be a very difficult side to beat. Gone, dropped. Can you believe how many chances? Run out on the cards. Run out on the cards, and easy run out it is. So Putti will remove the bails at the non-striker's hand. Well, better saying, I want a strike. I want to just try hard for the 6s. This, I think, is the 4th drop chance by the keeper. They have shuffled the position between Riaz and Dilip, but I don't think so. They have found a little bit of luck there behind the stumps. Luckily, they got a run out. 42 for the loss of 5. So Putti comes in. Putti bowls 3 dot balls. Professionally good bowling this one. Ball just were exactly required. Not trying to do anything fancy. Not trying to do anything silly. Simple job. Simple cricket. Bowl the line. Bowl the length. And make the batter work hard. Yeah, this will be wide. The batter had not shuffled, and the ball was away from the guideline. The first wide of this entire bowling innings of strong boys. So you can imagine how disciplined they are. Just the first wide, not a single no ball. So that's what is impressive about this young side. Another swing and a miss. Just not trying to shuffle across, not trying to hit the ball, just trying to stand and dispatch, no feet movement whatsoever, and the ball going straight back into the hands of the keeper.
Right in the block hole. Run down, run down. Abu giving the chase. No chance. No chance. Once it crosses the infield, it just run down quickly towards the final leg and the third man region. Gets the boundary. Unlucky here. Not a convincing shot from the batter, but still sneaks away a boundary somehow. The problem here is not that the ball running, but you don't get a good footing. You don't have strong footing on the ground. So you have to control your run towards the ball first and then try to save that boundary. So it becomes difficult to do both of things together. 47. So one ball left here in this 7 overs game. And that's a dot ball. It started off really well. It started off with a dot ball and ended up with a dot ball. So many dot balls in that entire 7 overs game. So that is exactly where Ami Kunekar could not capitalize. It's not a problem of boundaries and sixes, but I think they should have countered that to maybe singles, doubles, and they could not just get away from the clutches, from the hard bowling that has been bowled exceptionally good from strong balls right from the first over. Started by Sohail. Impressive was Nandesh as well in his 2 overs. Bowled a maiden wicket over. That is a rare entity in tennis ball cricket. And once again coming back to bowl his decent second over as well, picking up 2 wickets in his spell. Nandesh Sohail could not pick up the wicket, but he was quite economical, and that's why all the bowlers turning economical. And the score is just around 47. 48 runs required in 7 overs game, and we'll see the run chase here of the team. So hardly one player there, I think Saish, who went into the double digits scoring 11. The rest all in single digits for Ami Kunekar as they struggle to cope up with the pace of the bowlers and also the variations. We'll see the run chase of 48 runs in a short while. कितले फर्स्ट ओवर का कितले थ्रू आउट Hey!
बॅट्समॅन कोणते ते? दीपक स्ट्रायकर हा नॉन स्ट्रायकर दिलीप. दीपक आणि दीपक स्ट्रायकर दिलीप ना. नॉन स्ट्रायकर. So welcome back. So the chase score is around 48 in already 7 overs. Saish. Target in a reverse space, a very good start. First ball has been dot. So altogether they required 48 in already 7 overs to win this match. Strong boy Sakwa versus Ami Kunaikar. This time is high up in there, and his window is down. And yes, a very simple catch has been taken. 48. So first we get down, that is Deepak has been back into the pavilion without scoring any score. No, second ball. पहिला डॉट. चेतन तो चेतन अपन बैट्समैन अब्बू सोनू ना. So Sonu comes in back for the ready to chase the target of 48. Saish making it on himself straight to the fielder. Just one runs in this way. Strong box has been opened the account. Total moves on to 1 for 1 at the progressing first power play over. And it's only 2 players will be allowed outside the 30-yard circle, and then of the second over, 3 players will be allowed, and after that it will be normal. Gaines trying to hit it the green reverse way. A very good ball. So the score is just 1 in this progressing first over. The full toss one, and themselves 2 fielders are down there to chase the ball, and at last it's a boundary. So first boundary of this inning, which has been headed by Mr. Dilip, and the score moves on to 5. पाचवा. फर्स्ट डॉट विकेट सिंगल डॉट आणि 4. 5 झाले. डॉट विकेट सिंगल डॉट आणि 4. Again trying to hit it on one more dot ball. So after completion of first over is 5 for 1. A very good start. So required it is 7 runs per over. Already 5 losing 1 wicket. बॉलर कोण भाई? इथून बॉलर कोण? So Akshay will start the second power play over. A very good tournament which is organized by Sidona Sports and Cultural Club in association with Mr. Mithun Vaidya. It's the tournament which has been commenced today. It will last on the 3rd May 2026.
was ball taking a big gap over there for a boundary. So second boundary of this inning. Akshay. So Sonu hit the first boundary first by Dilip, and his total moves on to 9. Oh, what a superb timing shot! Back to back to boundaries. Total moves on to 13. What a superb timing shot by Mr. Sonu. Back to back two boundaries. So third boundary of this inning. Again, this is now the hat trick. So back to back three boundaries by Mr. Sonu. And the score jumps to 17. Again, a super piece of bowling after hitting 3 consecutive boundaries for Akshay. It's a dot ball. Score remains on 17. Loss of 1 wicket. Again, this time slightly missed by the fielders. The result of one more boundary has been added to the score. So fourth boundary of this over for Akshay. So super piece of batting by Mr. Sonu. Again, this time it's a full toss, but the straight chance of run out over there. A very good running mid wickets as a result, just 1 run. So picking up a quick single over here. So our combination of 2 over the average of 11 runs per over is 22. For 1 is now once again Saish. Will bowl his second over and third over of the inning. So Saish will bowl his second over and third over of the inning. Again, it's a real shot. And yes, it's the first 6 of this inning. First ball. Last in ball, dot 4 and single. हा बॉलर साईश आहे पहिले ओव्हर टाकले होते तस 28. So 28 is the score. The progressing third over from Saish. First ball has been punished for the 6. And it's a wide. So one more has been added to the score. Total moves on to 29.
Again, slightly placed. Just a single. Moves on to 30. Oh, slight placement. They're getting a quick singles over here. And moves on to 31. 31 for losing just one wicket at the progressing third over. This is the first match of this tourist session. The tournament has been organized by Sri Ravalna Sports and Cultural Club. Oh, good hit. And it's a one bounce boundary. One bounce boundary for Sonu, and this way total moves on to 35. Just 13 more runs required. Oh, trying to hit it, misses. Single. Score 36. Over झाली. 6. So total mission of 3 overs is 36 for 1. Pehla 6. मग वाईड. मग सिंगल 4 डॉट आणि 1. नाही झालं. सेकंड बॉल वाईड. मग थर्ड आणि फोर्थ बॉलला सिंगल मग बाउंड्री मग डॉट आणि मग सिंगल. कुठला नाही पहिला सेकंड बॉलच वाईड आहे तो. लास्ट बॉल सिंगल. हा सोनू आहे. बॉलर कोणतोच म्हणतो अक्षय येत आहे. So the fourth ball over will be bowled by Akshay. This one is strike is Sonu. Should poise this time high up in the air. Oh, it's a misfielding. As a result, it's a boundary. So 4 more has been added and almost on to 40. Just now 8 runs has been required for strong boys of Sakwai to enter into the next round. So full toss 1, slightly placed. And it's a no ball. So 2 runs has been added. So again it might be wide, yes. So one more has been added to the score. Score moves on to 40. Just 5 runs has been required for strong boys of Sakwai to win this match. So it moves on to 44. Just 4 runs has been required. One. And yes, he has been out. So Dilip. The second wicket down. At the score of 44.
by batsman Riaz. Riaz, the captain of the team, will now join the Sonu. Riaz. Just 4 runs have been required in the remaining balls for Strong Boys of Sakwai to enter into the next round. So Taligaon 11 of Taligaon and Dhatsakal, Star of Korgaon. Ball, it's a very good one. Dot one. Nice number, Direct by. आता कोणाचा Aishant का? हाँ यानी है. Ball has been lofted straight to the long. Square leg, just 1 run. Closer to 45. Just now 3 runs has been required. नहीं वाइड नहीं दिया. वाइड नहीं दिया. हाँ वाइड नहीं दिया. So dot one. सो मरे कमी कर. 7 देऊ नका 7 तेवढं जातं. हां ओके. Okay. So after completion of 4 overs, is 45 for 2. Just 3 more runs required. बॉलर कोणता आहे? बॉलर कोणता? Gavrish. Oh, catch has been dropped and it's a 6. So congratulations, Strong Boys. Pointing to the next round. So after this match, the match has been played between the winners of this team, that is Strong Boys of Sakwai versus Taligaon 11 of Taligaon. So within a short while, there will be a second match. धारसकल नाही आहे. कोणतरी बाल. तालिगाव 11 आणि आता स्ट्रॉंग बॉयज. काय नवदुर्गा बॉयज नाही. आता ती तालिगाव 11 आणि स्ट्रॉंग बॉयज आहे. तिसरी तालिगाव आहे. आहे फोटो में नहीं है. कौन सा फोटो? लॉट्स का फोटो भी है. नहीं है इसमें तालिगाव 11 और धारसकल कोरगांव है. धारसकल देखो स्टार कोरगांव बरोबर. हां नवदुर्गा बॉयज मडकई आहे. काय का विचारत ना उद्या दीद राहो. आता असेल ते तालिगाव नाही रे लॉट्स. ड्रॉ घेतो. दोन ड्रॉ घातले. दोन ड्रॉ घातले बघा. नाही 2 ड्रॉ घातले तुम्ही. आता तालिगाव यश आणि धाडसकळ नाही. आता धाडसकळ कोरगाव तो पहिलं बोला ना. आता स्वतः ड्रॉ. आता नाही त्यात तिथून कोण धाडसकळ तो नवदुर्गा म्हणतो मला कोणाशी. नवदुर्गा बॉय झालं मडकय. आता कोरगाव धाडसकळ कोरगाव आहे ना. हां तालिगाव ना हो म्हणतो नाही फाटला माझ्याकडे. तुम्हाला काय लागते तुम कल के लॉट का टीम बता. ओके. नवदुर्गा काय ते? नवदुर्गा बॉयज मडकई ओके. आता ती धाडसकळ नाही आहे. स्ट्रॉंग बॉयज और मडकई ना. हां नवदुर्गा बॉयज. नहीं 6 ओवर का 7 ओवर चढ लाईन दी जातात नाही भाई. 5 सारखे असो. 7 तो नो 7 कर आपण 5 सारखे.
स्कोर केलो आयज कमी आसा आयज प्रॉब्लेम ना चड जाता ती हेची दिसता 10 ओव्हरीची मॅचची दिसता चड लॉंग वयता चड लॉंग वयता टायम कितलो घेता ते सनूकच दिवचें पडलें न्ही मॅन ऑफ द मॅच किती जाली एक टीम ना ना कोरगांवची कोण तरी एक्सपायर्ड आला So the man of the match of this first match, the person who has been taken 35 runs and given 5 runs and 1 wicket. Mr. Sono, please come and collect your man of the match. So I request our Nautisa to hand over the man of the match trophy to Mr. Sono for consecutive 35 not out and taken 1 wicket and given just 5 runs in the over. A very good performance. So I call upon the captain of Nodurga Boys Medical versus Strong Boys of Sankwal. Please come for the toss. मच्छी करून घे व्यवस्थित बरे हां मच्छी करून घ्या व्यवस्थित हां मिथून ना थंय बट टॉस करपा न्ही पूण हां हय स बऱ्या खंयचे रे मी हय हां सॉरी So the next match that is between Nodurga Boys of Medical versus Strong Boys of Sankwal. Sankwal won the toss and elected to bowl. आणि कोण आयला रे हां योगा आसा ताका थंय जुनियर हां सुबेको सर हां हां ओके हां मग चडशे भितर
ना ना बरें केलें बरें केलें आनी कितें हातून कसं एक बॉल सारखं डाऊन टॉस स्ट्रॉंग बॉल्स फिल्डिंग दोन बॉल खाला एक्स्ट्रा कोण डाड रे उतर रे खाली उतर सारखे आता बरं असू ओल्ड एक बॉल दी तांकां पे करपाक ओल्ड बॉल खेळा तो ओके 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 ओ दोन्ही जायना माझ्या कडेन तेच पळयतालो हांव मागीर दोन्ही कडेन जाता कितें उलो तेच जायना रोटेट करना जाल्यार भाई मागीर म्हाजे कडेन साकवाळ येतो ताच्यान काडलेलो आसता हेलो हेलो। तो अब प्री क्वार्टर फाइनल्स का आगाज करते हुए दोनों टीमें पहले मुकाबले में आसान सी जीत दर्ज की थी स्ट्रॉन्ग बॉयज ने अमेकोनेकर के खिलाफ, और थोड़ा सा समय दिया था उनको यहाँ पे क्योंकि बहुत गर्मी है, तपती धूप है और लगातार 2 मैचेस खेलना थोड़ा आसान नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा एक 15 मिनट का समय दिया है। उसके बाद फिर एक बार टॉस हुआ यहाँ पे मैदान में और टॉस जीता स्ट्रॉन्ग बॉयज ने, फिर एक बार गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। नवदुर्गा बॉयज मड़कैया संघ के खिलाफ। तो देखेंगे यहाँ पे ये प्री क्वार्टर फाइनल्स का मुकाबला। और यहाँ पे खेलने का प्रयास और क्या शानदार फील्डिंग पुटी
इन दी एयर खेला जरूर था, लेकिन वहां पे फील्डर को पाया और पहली गेंद पर सफलता पाते हुए सोहेल। तो 1 for 1, बहुत ही खराब शुरुआत यहाँ पे नौरुगा बॉयज मड़के के लिए। सोहेल के खिलाफ यहाँ पे प्रहार करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन वहां पे फील्डर तैनात किया था इसी शॉट के लिए और चलता बनाया यहाँ पे पहली गेंद पर सफलता पाती हुई स्ट्रॉन्ग बॉयज की टीम। तुला काय स्कोर पाहिजे ना, फक्त व्हेरीफाय करायला ना, कारण ऑनलाईन स्कोरिंगचे तुमची वेगळी असते टीम. सर माझी टीम मी एकटाच आहे, 1 1 2 मी टाकतो स्कोर, मला नाव तर माहित पाहिजे प्लेयरची. हां ओके ओके. आता कोण आउट झाले? लक्ष्मण आउट झाला. आणि नॉन स्ट्राइकला कोण आहे? मंथन. आता स्ट्राइकवर केशव आला. नए बल्लेबाज यहाँ पे केशव, पहली गेंद पर यहाँ पे सफलता और अब दाएं हाथ के बल्लेबाज आए मैदान में। तो शुरुआत की थी दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों से। अब पहली गेंद पर जब आप विकेट खोती हैं तो यहाँ पे सोच ये है कि एक अच्छी साझेदारी बने और इस पावर प्ले के जो ओवर्स है उनको बखूबी बुना जाए। 6 ओवर का ये मुकाबला। तो यहाँ पे भी कट करने का प्रयास किया था। इनके पास गति है और अगर इस टप्पे पर गेंदबाजी करेंगे, ऑफ साइड में बहुत फील्डर तैनात किए गए हैं। बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी, थोड़ा सा बाउंस मिला, उछाल था वहां पे और सीधा विकेट कीपर के हाथ में। तो ऐसी ही गेंदबाजी की थी उन्होंने, डिसिप्लिन भरी गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में और उसी वजह से आसान सी जीत मिली थी। 47 रन पर, सिर्फ 47 रन पर रोका था अपनी विपक्षी टीम को और वहां पे ये प्रदर्शन भी यहाँ पे रिपीट करना चाहेंगे। और शुरुआत भी 1 विकेट से की है उन्होंने अपनी इस प्री क्वार्टर फाइनल्स की। इस बार भी यहाँ पे थोड़ा सा शफल होकर लेग साइड में खेलने का प्रयास, क्वाइल लेग में, लेकिन गति होने के कारण थोड़ा सा मुश्किल होता है सोहेल के खिलाफ। ज्यादातर कामयाबी हासिल करने में सक्षम रहते हैं पावर प्ले के ओवर्स में। पावर प्ले के ओवर्स में आप देखते हैं कभी कभी बल्लेबाज जो है इन दी एयर हवा में खेले और बल्लेबाज काफी सक्षम, यहाँ पे बहुत ही अच्छी ताकत, बहुत ही अच्छा जो पिकअप शॉट लेग साइड में लंबा गया ये गेंद। स्कोर बढ़कर जा चुका है 7 रन। पहला सिक्सर आता हुआ, पहला 6 रन इस प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले का। लेंथ में चोटी यहाँ पे इस बार थोड़ी सी छोटी रही लेकिन ऑस्ट्रम के बाहर। तो एक ही जो गेंद थी वहां पे चूंकि फुल टॉस गेंद की, बाकी सब गेंदें सटीक निशाने पर। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर नवदुर्गा बॉयज मड़कई। नंदेश आए हैं गेंदबाजी में यहाँ पे जिन्होंने काफी काबिल तारीफ गेंदबाजी की थी। 2 विकेट चटके थे, 1 मेडन विकेट ओवर भी डाला था यहाँ पे पहले मुकाबले में। तो अब 6 ओवर के मुकाबले में एक ही ओवर जो है वो पावर प्ले का ओवर और बाकी सब में फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस हट जाती है। यहाँ पे वही जैसे कि थोड़ा सा शफल होने का प्रयास किया था और स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन अब जो गेंदबाज है उनको बहुत फील्डर जो है बाहर रखने को मिलते हैं, 5 फील्डर, तो इस वजह से थोड़ी आसानी पड़ती है गेंदबाजी में। हालांकि पिछले मुकाबले में उन्होंने पावर प्ले में भी गेंदबाजी बखूबी की थी। मेडन विकेट ओवर वो पावर प्ले में किया था। इस बार भी थोड़ी सी बाहर, लेकिन ड्राइव करने का मौका सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा में। थोड़ी सी चूक यहाँ पे, लेकिन आंखें जड़ाई रखी क्योंकि कभी कभी यहाँ पे इस सतह पर गेंद जो है थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है
और इस वजह से फील्डिंग करना उतना आसान नहीं है, जानते हैं सभी खिलाड़ी। तो 2 रन। ये देखिए कैच हो सकता है, दीपक पत्रो यहाँ पे गेंद के नीचे, और इस बार बहुत ही अच्छा रिकवर किया, वहां पे उनके पीछे गई थी, क्योंकि कभी कभी हवा का झोंका है वो उसको पीछे लेके जाता है, और वही हुआ। लेकिन आंखें जड़ाई हुई थी, सही बैलेंस, और मैंने पहले ही कहा था बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार जानदार फील्डर है, और कैची अमूमन छोड़ते नहीं, इस बार भी छोड़ा नहीं और लिया है दूसरे चांस में। तो 10 रन पर यहां पे दूसरी विकेट खोती हुई। तो मंथन यहां पे प्रयास कर रहे थे कि और एक का बड़ा हिट लगाएं। उन्होंने पहले ओवर में एक 6 जरूर जड़ा था। 8 रन की पारी खेलकर वापस पेविलियन में जाते हुए मंथन, और नए बल्लेबाज आए मैदान में, राजू। तो लेफ्ट एंड राइट एंड कॉम्बिनेशन यहां पे जारी रखा है शांता दुर्गा बॉयज के टीम ने। नंदू बहुत अच्छे लेंथ डालते हैं, उतनी गति नहीं है जितनी कि सोहेल के पास है, लेकिन बहुत अच्छा लेंथ जो चाहिए टेनिस बॉल क्रिकेट में। फिर एक बार डाउन द ग्राउंड खेला गया शॉट, लेकिन वहां पे फील्डर तैनात। फिर एक बार अच्छी फील्डिंग, लेकिन फिर भी गेंद नहीं, फिर भी अंदर, फिर भी अंदर। यहाँ पे दीपक पत्रो थोड़ा सा यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 रन यहाँ पे जरूर दौड़े, लेकिन क्या शानदार फील्डिंग देखिए। गेंद ने काटा जरूर बदला था, और बहुत ही अच्छी टाइमिंग हुई थी, तेजी से जा रही थी, दौड़ रही थी गेंद, और दीपक पत्रो ने यहाँ पे इस चौके को बचाया, बहुत ही अच्छे से बचाया है। मुझे भी लगा था कि यहाँ पे चौका जरूर मिलेगा, जिस तरीके से काटा बदला था इस गेंद ने। तो इनको भेद पाना आसान नहीं है दीपक पत्रो को, बहुत ही बढ़िया फील्डर। ये जी हाँ, थोड़ा सा अक्रॉस द लाइन, यानी कि एंगल यूज करते हैं अराउंड विकेट, लेकिन ज्यादातर आप देखिए जब एंगल यूज करते हैं, लेकिन गेंद जो है गाइडलाइन के अंदर ही होती है। तो एक डॉट गेंद की है यहाँ पे नंदेश ने। स्कोर 12, और ये आखिरी गेंद, और यहाँ पे भी डॉट गेंद। तो बहुत ही अच्छी समाप्ति भी यहाँ पे इस ओवर में नंदू की। तो नंदेश ने 2 अपनी ओवर में दिए हैं सिर्फ 5 रन, यानी कि 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 12 रन, 2 विकेट के नुकसान पर नवदुर्गा बॉयज मड़कई। सोहेल आए हैं वापस। दूसरी ओवर सोहेल की, तीसरी ओवर टीम की। खूबसूरत गेंद यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत गेंद, वॉक दी स्टंप्स किया था जरूर ऑफ साइड में, लेकिन यॉर्कर यहाँ पे डाला बेहतरीन आउटसाइड ही ऑफ स्टंप। सोहेल ने कोई भी मौका नहीं, हालांकि थोड़ी सी चूक की यहाँ पे विकेट कीपर ने, और कलेक्ट करने में नाकामयाब। इस वजह से गेंद जो है हाथ में नहीं आया, 1 रन ना मिला 22 की बदौलत। स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। कुछ उसी तरीके की गेंदबाजी चल रही है, बहुत ही प्रोफेशनल अप्रोच। फिर एक बार ये देखिए वाइड शॉकर, क्या काबिल तारीफ गेंदबाजी चल रही है यहाँ पे सोहेल द्वारा। पिछली ओवर में नंदेश ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन जब आप दूसरी ओवर किसी भी गेंदबाज को देना चाहते हैं तो हमेशा से विकल्प इस टीम में तो सोहेल ही रहता है, क्योंकि बहुत बार उन्होंने जिस तरीके से कारनामे किए हैं, रन ज्यादा देते नहीं हैं, तो कप्तान पर उनका काफी भरोसा है। इस बार फुल टॉस, ये चौका मिलेगा, यहाँ पे गेंद को रोकना नामुमकिन। ये स्लाइस हुआ, फुल टॉस गेंद की, खराब गेंद थी, मारना चाहते थे 6 रन के लिए, लेकिन गेंद आउटसाइड इश यहाँ पे किनारा लगा, और 4 रन के लिए दीप थर्ड मैन की दिशा में। तो राजू के बल्ले से आता हुआ ये चौका, हालांकि थोड़ी सी चौके यहाँ पे लेंथ में फुल टॉस की। फिर एक बार तैयार, इस बार स्लाइस किया, फिर एक बार
डाउन द ग्राउंड मारने का प्रयास किया था, लेकिन ये देखिए कभी कभी आप जब बाहर गेंदबाजी करते हैं आउटसाइड लाइन ऑफ ऑफ स्टंप और जोरदार मारने का प्रयास करते हैं तो संपर्क सही से हो नहीं पाता है। इस वजह से यहाँ पे एक ही रन का इजाफा हुआ। बाहर रख रहे हैं इस गेंद को, हर एक गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं, और जब भी बल्लेबाज सफल होता है तब भी वो बाहर ही रखते हैं, तो फॉलो करते हैं बल्लेबाज को। 18 रन फिलहाल, तीसरी ओवर जारी। एक बार फील्डर वहां पे मौजूद, तो अच्छे से यहां पे कट किया, फील्डर को पाया, 1 रन का इजाफा। और ये होना चाहिए, हर एक गेंद पर आपको चौका छक्का मिल नहीं सकता है, तो डॉट गेंदे जो है वो कम खेलनी चाहिए किसी भी टीम को। जितनी डॉट गेंदे आप कम खेलोगे उतना ही स्कोर जो है वो अच्छा होगा, साझेदारी अच्छी होगी, और यही सोच रखनी चाहिए। जब आपको खराब गेंद मिले तो उस पर प्रहार करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे भी 1 रन बटोरा, थोड़ी सी अंदर आई है गेंद और गति थी इसके इस गेंद पर, तो इस वजह से 1 ही रन जुड़ चुका है खाते में। और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 20 रन यहाँ पे नवदुर्गा बॉयज मड़कई की टीम 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा आगाज हुआ था, जिस तरीके से ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पे हुई थी अमित कोणेकर चषक की, और हर एक टीम रहती है यहाँ पे बहुत ही आतुर कि कब अमित कोणेकर का चषक हो जाए और हम यहाँ पे अपना खेल का प्रदर्शन कर जाए, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं मिथुन। हर एक टीम को खुद कांटेक्ट करते हैं और खुद संपर्क करके उनको यहाँ पे मौका देते हैं। अच्छी अच्छी टीम, हर एक जो गोवा टेनिस बॉल में पंचायत और म्यूनसिपैलिटी की टीमें खेलती हैं, उनको हमेशा से यहाँ पे आना और खेलना, प्रदर्शन करना काफी अच्छा लगता है। ये स्लोअर गेंद, यहाँ पे दीपक पत्र तैयार और सीधा हाथ में, उसमें ताकत नहीं थी, मारने का जोरदार प्रयास जरूर किया था, सही कनेक्ट नहीं और सही पावर भी नहीं, हालांकि उतनी अच्छी गेंद नहीं थी, इस पर आना चाहिए था कम से कम चौका या छक्का, लेकिन सीधा दीपक पत्रों के हाथ में और 1 विकेट ली यहाँ पे कैच के जरिए दीपक पत्रों ने। तीसरी विकेट की समाप्ति 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो फिर एक बार अरुण, ये और एक कैच हो सकती है, अरुण कह रहे हैं मैं ही लूंगा ये कैच, और छोड़ दिए। ये मुझे लगता है कम से कम 6ठी और 7वीं कैच छोड़ चुके हैं इस अमित कोणेकर चषक में स्ट्रॉन्ग बॉयज, लेकिन फिर भी बहुत ही मजबूत स्थिति में, क्योंकि गेंदबाज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब अरुण तो किसी पर थोप नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने खुद ने ये कैच छोड़ा है और कोई नजदीक भी नहीं था, आसान से लेना चाहिए, अच्छे फील्डर हैं। तो कभी कभी यहाँ पे जो हवा बहती है इस वजह से कभी कभी गेंद जो है वो हिल जाता है हवा में और आसान नहीं होता है जो फील्डर नीचे होते हैं। लेकिन बाकी फील्डर को देखिए और दीपक पत्रों को देखिए, कैसे भी है, ऊंची हो या फ्लैट हो, तो आंखें जड़ी रहती हैं, बहुत अच्छे पोजीशन में रहते हैं, बहुत बढ़िया फील्डर। ये यहाँ पे दे मारा है लेकिन फील्डर तैनात इस स्विच हिट के लिए, बैकवर्ड पॉइंट, डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, तो आएगा सिर्फ 1 रन। तो अरुण की कोशिश यहाँ पे जारी, और अरुण को मौका दिया है, अबू को मौका दिया है स्ट्रॉन्ग बॉयज ने, क्योंकि यह बेहतरीन प्रदर्शन किया है जब मारमुगांव का टूर्नामेंट हुआ था और साकवाल में भी बिग बैश हुआ था, तो अच्छा प्रदर्शन किया था, बहुत ही
इन दोनों युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों ने, तो सबको मौका दे रहे हैं और अच्छी टीम बनाने की प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी आप 1, 2, 3 या 4 टूर्नामेंट खराब प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जब आपको अनुभव मिलता है तो आप एक बेहतर टीम बन जाते हैं। ये देखिए थोड़ी सी बाहर, लेकिन काफी अंदर, गाइडलाइन के अंदर, बहुत ही अच्छी गेंद। तो ऑफ स्टंप के बाहर ही रखने का प्रयास, और मुझे लगता है नेट्स भी बहुत करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करिए डेली नेट्स में और इसी लाइन पर गेंदबाजी करें तो आपको जब मुकाबले होते हैं तो आसानी पड़ती है। अभी भी 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर, बहुत डॉट गेंद है। तो आप बल्लेबाजों के ज्यादा मुझे लगता है गेंदबाज जो है उनको सराहना करनी पड़ेगी। जी हाँ, ये बाहर, जी वाइड करार दिया अंपायर ने, काफी बाहर इस बार, लेकिन कोशिश तो वही है कि ऑफ स्टंप के बाहर डाली, प्रयास वही है और प्लान भी वही है। ज्यादा कुछ नया सोचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, विकेट के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही सूझबूझ भरी गेंदबाजी, और मुझे लगता है उनको जिस तरीके से प्लानिंग की थे हर एक मुकाबले में, उसी प्लानिंग के तहत यहाँ पे आगे बढ़ रही है स्ट्रॉन्ग बॉयज की टीम। ये देखिए बाहरी किनारा, इस बार भी बाहर गया था, थोड़ा सा स्लोअर लेकर राहुल ने इनसाइड आउट शॉट खेलने का प्रयास किया था और यहाँ पे आउट, बहुत ही अच्छा कैच लिया योगानंद यहाँ पे फिर एक बार वापस जाते हुए, यानी कि चौथी विकेट का पतन होता हुआ। तो योगानंद वापस जाते हुए पेविलियन में 4 विकेट खो चुकी है यहाँ पे नवदुर्गा बॉयज मड़के की टीम, और हम है फिलहाल चौथे ओवर में जो अरुण डाल रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद 2 ओवर बाकी, यानी कि गेंदें कम होती जा रही है, लेकिन स्कोर बोर्ड में मोमेंटम जो आना चाहिए वो आ नहीं रहा है, वो दिख नहीं रहा है। तो किसी को तो यहाँ पे प्रयास करना चाहिए। सुदेश आए हैं नए बल्लेबाज। यहाँ पे भी स्लोअर गेंद और अच्छे से यहाँ पे ओवर को फिनिश किया, सीधा गाइडलाइन के अंदर थी ये गेंद, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 6 रन के नीचे यहाँ पे जा रही है या नवदुर्गा मड़के की टीम, और ये कम होता है, बहुत कम होता है, और इस वजह से मुझे लगता है आखिर के 2 ओवर में कम से कम अगर एक 24-25 रन आ जाए तो एक लक्ष्य जो है वो 50 के आसपास हो जाएगा, 50 के इर्द गिर्द। स्कोर है 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल 4 ओवर का खेल यहाँ पे हो चुका है और 4 ओवर में फिलहाल बने हैं 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर यहाँ पे सफलता प्राप्त की थी सोहेल ने, उसके बाद दूसरे ओवर में भी सफलता प्राप्त किए थे नंदेश, और सोहेल ने भी फिर एक बार गेंदबाजी की थी लेकिन काफी किफायती, और इस बार यहाँ पे 2 विकेट लिए हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, आप अगर एक ओवर में 2 विकेट चटकते हैं तो अच्छे हैं। और अबू आए हैं यहाँ पे 5वीं ओवर गेंदबाजी के लिए, तो अबू 5वीं ओवर स्लोअर गेंदे ऑफ कट और लेग कट जरूर करेंगे और कामयाबी रहते हैं उस गेंदबाजी के जरिए। ये देखिए यहाँ पे स्विच हिट खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन वहां पे दिलीप लामानी तैयार, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो सीधा रियाज के हाथ में। तो वो फील्डर बहुत अहम होता है क्योंकि इनके पास गति नहीं होती है और कटर्स डालते हैं, तो बल्लेबाज जोखिम लेता है और जोखिम लेकर यहाँ पे स्विच हिट खेलने का प्रयास करता है। तो ये खिलाड़ी जो होता है बैकवर्ड पॉइंट में तो अहम होता है अब जैसे गेंदबाजों को के लिए, तो वही यहाँ पे तैनात किया है। और ये देखिए क्या ये वाइड हो सकती थी, क्या ये विकेट पर थी। फ्लिक शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन थोड़ा सा चूके यहाँ पे बल्लेबाज,
यहाँ पे मौका जरूर था क्योंकि लेग साइड में थी गेंद। अगर फ्लिक शॉट खेलते हैं और बहुत बड़ा लंबा गैप है स्क्वायर लेग और फाइन लेग की दिशा में, तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से प्लेसमेंट करते हैं, टाइमिंग छोटी सी भी अच्छी होती है, तो ये गेंद चौके के लिए जाता है बिहाइंड विकेट्स। ये भी अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। देखा कितना सफल हो चुके थे बल्लेबाज, और जब आप सफल होते हैं गाइडलाइन भी सफल होती है। तो इस बार मुझे लगता है ये जो गेंद है वो सही से, जैसे रियाज ने बात की थी और कहा था कि आप विकेट को टारगेट मत करिए, आप अपनी जो प्लान है उस प्लान के जरिए गेंदबाजी करिए। फिर बार देखिए, इस बार थोड़ा सा वाइड, जी हाँ थोड़ी सी बाहर थी, लेकिन कोई गलती नहीं क्योंकि बल्लेबाज को फॉलो किया था, प्लान सही सा और अच्छे टप्पे पर भी गेंदबाजी की थी, लेकिन थोड़ी सी बाहर थी। कभी कभी ऐसी थोड़ी सी ह्यूमन एरर्स जो होते हैं हो जाते हैं टेनिस क्रिकेट में और क्रिकेट में। ये देखिए इस बार ऑफ कट, तेज थोड़ा सा डालने का प्रयास, क्योंकि पिछले बार यहाँ पे वाइड डी थी, ऐसे ही सफल हो चुके थे बल्लेबाज, तो इस बार थोड़ी सी ऑफ कट डालने का प्रयास किया था और एक ही रन दिया यहाँ पे। तो अबू ने भी यहाँ पे डॉट गेंदें डाली हैं, फिलहाल 4 गेंद डाल चुके हैं और 3 रन दिए हैं, 2 सिंगल्स के जरिए 1 अतिरिक्त रन आता हुआ। और फिर एक बार दायां हाथ के बल्लेबाज उनके विरुद्ध स्ट्राइक पर। इस बार देखिए थोड़ा सा सफल हुआ था, इस बार भी चूके तो बड़े शॉट खेलने का प्रयास करना चाहिए और कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से उनको कामयाबी नहीं मिल रही है बल्लेबाजों को। तो दाद देनी पड़ेगी गेंदबाजों को, क्योंकि ये लगातार दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं स्ट्रॉन्ग बॉयज, और ऐसी कड़ी धूप, जिस तरीके से तापमान है लगभग 39-40 के आसपास, और ऐसी कड़ी धूप में लगातार 2 मुकाबले खेलना और इतना शानदार प्रदर्शन गेंदबाजी में करना आसान नहीं होता है, लेकिन जान झोंक रहे हैं अपनी टीम के लिए और ये काबिले तारीफ है। देखिए यहाँ पे पिक शॉट लेग साइड में पुट्टी तैयार, तो 2 बहुत ही अच्छे फील्डर गोवा के वहां पे उन दोनों को तैनात किया, एक पुट्टी और एक दीपक पत्र। तो एक ही रन आता हुआ इस 5वें ओवर में, और इस 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर नवदुर्गा बॉयज मड़कई। तो अब आएगी यहाँ पे आखिरी ओवर, मुझे लगता है पुट्टी ही डालेंगे यहाँ पे गेंद। 6 ओवर डाली थी उन्होंने पिछले मुकाबले में, 2 विकेट भी चटके थे, आखिरी ओवर थी, कुछ ज्यादा रन दिए नहीं थे, तो मनोबल भी काफी अच्छा होगा। और एक बार आपको टप्पा मिलता है किसी भी विकेट पर, तो आप प्रयास करते हैं कि उसी टप्पे पर गेंदबाजी करें, और सफल भी होते हैं ज्यादातर। तो सोनू शर्मा उर्फ पुट्टी आए हैं आखिरी ओवर गेंदबाजी करने के। 6 ओवर का मुकाबला है, स्कोर तो कुछ बड़ा हुआ नहीं यहाँ पे, सिर्फ 28 रन, क्योंकि यहाँ पे जो बाउंड्रीज है थोड़ी सी लंबी है, उतनी भी कम नहीं है, इस वजह से 6 रन मारना, आपका संपर्क सही से होना चाहिए, आपकी पोजीशन, आपकी पावर, टाइमिंग, सब कुछ सही होना चाहिए। ये देखिए ये कैच, और ये लिया है, पहले दूसरे और तीसरे प्रयास में लिया है, लेकिन लिया तो जरूर है। तो इस वजह से पुट्टी को मिलता हुआ पहली गेंद पर विकेट यहां पे, तो 5वीं विकेट का पतन होता हुआ। महबूब ने लिया यहाँ पे ये कैच, अच्छा कैच, खुश होंगे कि छोड़ा नहीं, वो अहम है, क्योंकि उसके बाद सब आंखें जो है आपके ऊपर होती है, बार छोड़ते हैं, लेकिन पकड़ो तो कैसे भी पकड़ो, लेकिन पकड़ो जरूर। तो पुट्टी को मिली पहली यहाँ पे सफलता, फिर एक बार तैयार होंगे। इस बार भी यहाँ पे फील्डर और लिया है, थोड़ा सा वाइड था, थोड़ा सा शॉर्ट था, यहाँ पे पंच किया था डीप एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में, लेकिन सीधा फील्डर को पाया। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट मिलती हुई, 2 सफलताएं प्राप्त करते हुए यहाँ पे पुट्टी सोनू शर्मा। तो 28 रन और 6 विकेट यहाँ पे खो चुके हैं नवदुर्गा बॉयज मड़कई, और ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है फिलहाल ये स्कोर बोर्ड।
कोशिशें जारी हैं। मंथन ने यहाँ पे छक्का जरूर लगाया था अपनी पहली गेंद पर, लेकिन उसके बाद सिर्फ आया है एक ही चौका राजू के बल्ले से, और 6 और 4 रन। बड़े शॉट्स दिखे नहीं इस इनिंग्स में। अगर बड़े शॉट छक्के और चौके दिखते नहीं है तो कभी भी आपका स्कोर जो है बड़ा नहीं होता है। हालांकि स्ट्राइक रोटेट करने में कामयाब रहे थे, लेकिन बड़े शॉट्स खेलने में नाकामयाब रहे ज्यादातर बल्लेबाज, और यही दर्शाता है कि किस तरीके से गेंदबाजी की है। बहुत ही सटीक और लाइन इन लेंथ और उम्दा गेंदबाजी। हैट्रिक पर होंगे यहाँ पे पुट्टी। ये कैच हो सकती है जी, नहीं, थोड़ा सा आगे गिरा ये गेंद, और 2 रन की मांग। जी हाँ, 2 रन आसानी से लेंगे जरूर। तीसरे रन के भी सोचेंगे यहाँ पे, लेकिन 2 ही रन मिलेंगे। तो ये भी थोड़ी सी छोटी थी, फुल शॉट खेलने का प्रयास किया था, अच्छे पोजीशन में थे नहीं, फिर भी शॉट के पीछे गए और हवा में थी गेंद ये, लेकिन फील्डर के काफी आगे गिरी और 2 रन मिलते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन 6 विकेट के नुकसान पर। तो 3 गेंदें अभी भी बची है। 2 विकेट पृथ्वी ने लिए, 2 विकेट अरुण ने लिए हैं, और पृथ्वी चाहेंगे कि और 1-2 विकेट चटकाए तो अच्छे दावेदार होंगे यहाँ पे। यहाँ पे भी कैच ही नहीं, ये लगा है लगता है मुझे, जिस तरीके से नहीं वहां पे दीपक पत्र मौजूद, लगा जरूर था अच्छा, लेकिन जब दीपक पत्र वहां पे मौजूद तो कैच छोड़ने का कोई भी यहाँ पे चांस नहीं है। तो फिर एक बार और एक कैच आसानी से लेते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में दीपक पत्र तीसरी सफलता प्राप्त करते हुए यहाँ पे पुट्टी। 4 गेंदें अभी तक डाली है, 3 विकेट चटके यहाँ पे पुट्टी ने, और स्कोर बोर्ड है 30 रन 7 विकेट के नुकसान पर। ये तो जैसे सोचा था वैसा हुआ नहीं। पहले टॉस जीतकर आमंत्रित किया नवदुर्गा बॉयज मड़कई को, और जिस तरीके के पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन था गेंदबाजी, उससे बेहतर किया है इस दूसरे मुकाबले में। पहले मुकाबले में 47 रन पर रोका था 7 ओवर में, और अब अगर आप लेखा जोखा देखा जाए तो 2 गेंदें बची है और 30 रन पर 7 विकेट है, तो उससे बेहतरीन। अगर 6 रन के नीचे रखते हैं तो क्या बात होगी। इस बार अच्छा शॉट, एक क्या खूबसूरत पिकअप किया यहाँ पे लेग साइड की दिशा में, ताकत थी और बहुत अच्छा टाइमिंग भी, सही संपर्क दे मारा आया वाई फायर 6 रन के लिए। तो अब स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। कि फिर भी उस स्तर पर नहीं जिस तरीके से डर लगना चाहिए चेस करने वाली टीम को, थोड़ा सा दबाव होना चाहिए था, लेकिन देखेंगे इस लास्ट आखिरी गेंद पर क्या करते हैं बल्लेबाज। इस बार स्विंग किया था, स्विंग इन द मिड था यहाँ पे विकेट कीपर के हाथ में, और इस तरीके से 6 ओवर की समाप्ति, और बहुत ही शानदार प्रदर्शन। जिस तरीके से शुरुआत की थी विकेट के जरिए, उसी तरीके से यहाँ पे अच्छी फिनिश भी किया, अच्छी समाप्ति भी की यहाँ पे पुत्ती ने। 3 विकेट चटके यहाँ पे अपने पहले ओवर में और टीम के आखिरी ओवर में। तो 36 रन पर रोका यहाँ पे नवदुर्गा बॉयज मड़कई की टीम को। 37 रनों का लक्ष्य रखा है, और 37 रन मुझे लगता है नहीं उतने कठिन होंगे, क्योंकि इनके पास काफी अच्छे युवा खिलाड़ी भी है और प्रतिभावान खिलाड़ी भी है और एक्सपीरियंस खिलाड़ी रियाज भी यहाँ पे मौजूद। तो 37 रन 6 विकेट में, तो अपने हर एक खिलाड़ी को यहाँ पे बखूबी सराहना करेंगे कप्तान, जिस तरीके से हर एक गेंदबाज ने आकर किफायती गेंदबाजी की। तो नवदुर्गा की टीम जो है मड़कई की टीम, तो जैसा सोचा था, जिस तरीके से हम लोग कम से कम 50-55 के आसपास जाएंगे, उतना हुआ नहीं। एक भी बल्लेबाज दोहरे आंकड़े को छू नहीं पाया है। हाईएस्ट स्कोर जो किया है यहाँ पे वो है मंथन और राजू ने, दोनों ने 8 किए, और उसके बाद 5-2-1 6 रन, तो कुछ ज्यादा किया नहीं, इस वजह से स्कोर है सिर्फ 36 रन। और 37 रन यहाँ पे अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे 37 रन का पीछा करने के लिए। आएंगे, देखते हैं दूसरी पारी।
चार धाडल्या खंयच्या वर्साच्यो ती न्ही हें आसा पळय कितें तो बूक आसा पळय तो बोरकराचो थंय हांवें रिमार्क मारून दवरलो आसतलो पळय कितले शॉर्ट टेप हय चारूच वाडटलो तो बाकीचे आशिल्ले आमचे कडेन बरें बरें ओके त्यो दिल्यो ताका आज दिवपाच्यो त्यो हॅलो त्यो युएसाच्यो फायली धाडल्यो मरे ताका कितें करपाच्यो हय काही सांगला मरे हांवें काल ती नाका हाडपाक रे आसा त्योच धाडपाच्यो त्यो कंपल्सरी ना सगळ्यो धाडपाक ती धाडीन जाल्यार आतां सही ताका हय ताका बरें बोरकराक मेल घालपाक नाल्यार फोन करून उलोवपाक लाय की फायली आसा म्हणून रेडी आतां सांगूंकूच ना रे मी सांगपाक जाय न्हू मिथून आतां आमी दोगूच जाण आसा जायच जाय ह्या तो व्हडलो टुर्नामेंट मरे ह्या दिसान जायना ह्या दिसान हरशीं फेब्रुवारी पर्यंत कोता येता आतां कोता येना आज 5 मॅच म्हटल्यार 5 ओव्हरीची मॅच म्हटल्यार तुका रिलीवर जायच ना कंटिन्यू उरता मरे 4-5 पर्यंत तरी उरतलोच न्ही ना बरें येतलें दीपक पत्रो आणि दिलीप लामाणे So loaded for 6 overs now the Boys has made just 36 runs and the target is just 37. The average of 6 runs per over. Prathosh will play the first power play over. And the first match strong ball has been deviated. Ami Kunekar in a easy way. It's the Prathosh. हो पत्रो न्ही दीपक So Deepak is on strike. Oh, full toss one, sharply placed. A punished first delivery in close to the boundary. First one, a full toss. Take on the room himself, and it's a boundary. Total moves on to 4. नाका आता मागीर एकदा कितले हरशी कंटिन्यू खेळ Comes the next over. Nicely come back. Prathosh After hitting the first boundary, the second ball dot. Score remains on the similar way. 4. Trying to hit in the reverse way. What a collection by the wicketkeeper Lakshaman. After hitting the first boundary, continues 2 dot balls from Prathosh. Again this time high up in there, but in a safe area. Manthan is a winger in the meanwhile. They have been taken couple of runs. A very good running between the wicket. They are on an average of 6 runs per over as the target is just 37 in allotted 6 overs. Very good tournament organized by Sri Ravanna Sports and Cultural Club in association with Mithun Vaidya.
Oh, what a joker. Continuous 3 dot balls. ना कंटिन्यू एक मिनिट 2 काढल्याने. So score remains. Oh, this time he has been wafted about 96. So score moves on to 12 after the completion of first over. A very good start by strong boys of Sankwari. In the return of 37, they have already made 12 runs. Very good reverse shot by Mr. Deepak. This is Yoganand will continue the second over. This is the 6 over match. We watched 1 over of power play instead of 2. The first match has been played of 7 over. Oh, very good start. That's the leg by. So for extras, which was total to 13. That's once again Deepak. Deepak Koto is known as a very good fielder. Again taking room himself at the second 6 of this inning. So now is on to 19. Second 6 of this inning from Deepak. Again this time trying to hit it, not connected it properly. It's a dot ball. Score remains on 19. The progressing second over from Mr. Yoganand. Oh, kept very low. Score remains on 19 at progressing second over. They are very relaxed. So just 37 has to be made in 6 over. Again this time there is a chance of run out. Oh, if he has been hit directly into the wicket, it could be happen. In the meanwhile, they have been taken one. So 2 more runs has been taken. One of the over 2. So he's off the leg byes. Again slightly straight to the fielder. Supesh is the fielder over there. Just 1 run. So the average of 11 runs per over is 22 after the completion of second over. Just 15 runs has been required in the remaining 4 overs for strong boys of Sakwai to win this and entered into the quarterfinal of this tournament, which has been organized by Sri Ravana Sports and Cultural Club in association with Mithun White. Is Praviraj first ball full toss lower delivery. What a very good feeling in this. Just 1 run.
Not able to connect it properly by bat and ball. As a result, his set out ball score remains on 23. Just 14 more runs required. Over this time lofted. Straight to Patosh. And a very good catch. In this way, they have lost the first wicket. So Dilip then back into the pavilion. So first wicket down of strong buzz of Sakwa at the score of 23. Request of Dilip. Now it's Riaz, the captain of the team. Riaz is the new batsman on strike, the captain of the team. Oh, trying to hit it. Not seen the ball properly. Nicely collected by wicket. Once again a dot ball after a wicket. Again, but this time it's a parallel 6. The superb shot from Riaz's bat. It moves on to 29. Just now 8 more runs required. Oh, what a superb one. This time also Jayesh is a fielder, also loose fielding as a result. It's a boundary. So double 3. Just now one more boundary has been required for strong boys. So after completion of 3 overs at the average of again is the 11 runs per over. So it almost to 33. 33 for 1. Just 4 more runs required in remaining 3 overs. Keshav. He bowled the 4th over. Again, a very good start by Mr. D. Keshav. First ball dot. Oh, this time was a very good catch taken by Raju. So Deepak has been back into the ball. So second wicket down. The score of 33. Better name. Oh, very good local length. So leg boys. So one more has been added to the score. Almost on to 34. Better name. Sanoj ka Anuj? Saroj this ka Saroj. Anuj. Oh, very good shot, but straight to the fielder.
Just 1 run. Sinkers have been added to the score and it will move on to 35. Still 2 more runs required. Not connected properly, so once again a dot ball. Score remains on 35. 35 for 2. Again, this time a straight shot and this is off, and it's a 6. So congratulations once again, strong boys of San qualifying entering the quarterfinal. Easy, not making too hard efforts. Just 4th over, they have been won this match. कोणी काढल्या विकेटी तेंच्यो विकेट बॉलराक दिवपाचें हय तेंचो कोण तो बॉलराक सोहेलान 2 ओव्हरीन पळय कितें केला तो 2 ओव्हरीन ना सोनूक वायट दिसता म्हाका सोनूची पळय लास्ट ओव्हर सोनूक केल्ले ते लास्ट विकेट काडले आनी अरुणानी बरें केलां अरुणान 2 रन दिवन 3 रन दिवन 2 विकेटी केले सोहेलान कितली केल्या 7-7-14 न्ही 14 आनी 1 विकेट ना 7 चड आसा नंदेश अरुण अरुण कितें तें 1 ओवर 3 रन्स न्ही 1 ओवर 3 रन्स 2 विकेट दुसरं कोण परफॉर्म आतां कोण म्हणटा बॅटींग म्हणटा कोणाली नाच न्ही ती बॅटींग कांय धरपाचें ना तितून मॅन ऑफ द मॅच कोण दिता अरुण 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 हांव दिवं चल दी So request Harish Kakodkar to hand over the man of the match of this match. And it goes to the person who has been given just 3 runs and taken 2 wickets. Mr. Arun, please come and collect your man of the match trophy in the hands of Harish Kakodkar. So thank you, Harish. So first session has been over.
Amin to stop that and gets back-to-back boundaries, and that's a very, very strong finish. 85 is what Aishant Nirangal managed to get in that 5 overs. Apart from Amin's over, all of the bowlers are turning out to be expensive. Amin's over was the highlight. We picked up 3 wickets for just 8 runs. Rushed all the bowlers into double digits. 12 runs in the first, 18 of the second, 29 of the third, and 15 of the last. And Amin's was the one who picked up 3 wickets. Whereas the batting scorecard is pretty heavy. It was departure quite early for Prathamesh, but then Rahul and Pritesh got themselves going. 360s and a couple of boundaries for Rahul's 28, and 30 runs. Magnificent knock from Pritesh, who initiated this momentum upward swing. 30 runs, and then good finish there with 3 boundaries from Gaurav. That's why they could get towards that a mammoth total of 85 of 5. So now we'll see the run chase of 86 runs. Chikalim strikers will have their task cut out. It's not going to be that easy against a pretty good bowling lineup of Aishant Nirangal. We'll see the bowling and the run chase in a short while. So let's check out the innings highlights here at Amikunekar Chashak, the match between Aishant of Nirangal versus Chikalim striker Chikalim. So here is the entire highlights of the first innings. So that's the entire highlights of the first innings. Now the batters are coming into action here to the run chase. So Vishwas and Mana, the 2 openers. For Chikalim, striker Prathamesh will start the match with his first power play over, which only 2 players have been allowed outside the 30-yard circle. So the required rate is 17 runs per over. 86 has been required in order for 5 overs to win this match for Chikalim strikers of Chikalim. Here for the first delivery of this Prathamesh. Trying to hit it. This is completely nasty. Collected by the wicket keeper. So match starts with the dot ball.
सुहास क्या विश्वास तो सुहास Trying to hit in the reverse way. Again misses it completely. So continues 2 dot balls from Prathamesh. Prathamesh not able to show his batter. But this time a very good start by his bowling. 2 continuous dot balls. But this time again a batsman shuffles. As a result, it's a continuous 3rd dot ball of this over. What a start by Prathamesh. Altogether they required 86 at average of 17 runs per over. Oh, this time not connected it properly. Ball has been hit into his, I think on his ear. Oh no, it's on the eye. A slightly injury. Ball has been hit on his eyes. But it has been nicely returned, I think. So currently is 4 dot balls of this over from Prathamesh. Again trying to hit in the reverse way, but this time he has been connected properly as it is the first boundary of this inning. It is by Vishwas. As a result, total moves into 4. Still it is not as per the required rate, as the required rate is around 17 runs per over. Just 4 runs has been made in first 5 balls. This time is extras in the form of wide. So one more has been added to the total, moves to 5. Again trying to hit in the reverse way. Again a dot ball. So over ends with of just 5 runs. So first over completion. Total moves into 5 without losing any wicket. Another 81 has been required in the remaining 4 overs at the average of 20.5 runs per over. A very good tournament organized by Sri Ravana Sports and Cultural Club. This is the 4th All Goa Panchayat as well as Municipality. 3 days for Panchayat and 1 for Municipality. Continues 29th, 30th, and first will be for the Panchayat, and on second will be for Municipality. Sarvesh will be the second over. Manya is the batsman on strike. So lots of runs has been required. Oh, what a shot. He has been doomed himself. And it's a boundary. Trying to hit in the reverse. A very good fielding over there. No more boundaries have been coming. Continuous 2 dot balls. Oh, this time has been lofted in between the gap for 1 bounce boundary. So 2 dot ball and the boundary, which will never helping them to reach out a total of 86. At least 3 to 4 boundaries per over has been required, and it's been mandatory
for the Chikalim. Oh, this time it's high up in there. And the fielder slips as the result is a boundary. So it moves on to 18. So our combination of 2 overs at average of just 9 runs per over is just 18. Sam high pin there. Okay, again a catch has been dropped. Just a single for one here. So last ball of this third over. Again this time wicket misses completely. Again one more dot ball. So this also ends with a dot ball. So after completion of 3 overs, it's 25. So 61 has been required at average of 30.5 runs per over in the remaining 2 overs. So after this match, the match has been played between Aryan Panther 77 of Asnora versus Ganpati Warriors of Darbandora. I request both the captains please come for the toss and also for the photo session. So both the teams, Aryan Panthers of Asnora and Ganpati Warriors of Darbandora. Back to the match. Ashish will bowl the 4th and second last over of this over. 61 has been required in just 12 balls. Oh, what a super piece of shot from Mania. Total moves to 29. Again, 57 more runs required in the remaining 11 balls. This time again is lofted high up in the air. Oh, again a catch is down and they will be taken easily couple of runs. So 2 more has been added to the score, 65. So 55 has been required now in 10 balls. Oh, Yorker length. No, the wickets are still there. Oh, it's a full toss and they got a full opportunity. After a long time, it's a 6. So 6 more has been added to the score now. Yes, this is the first 6 of this inning. Leaded by Mania. 36.
37. Again, lots of runs has been required for Chikalim to win this match. A lofty run, slightly placed into the leg side for the boundary. 41 is the score. Again, lots of struggles has been required for Chikalim strikers to reach the point of 86. Again this time in a reverse one bounce boundary. It will move on to 45. Not bad. So 39 more runs required in the last over. Very positive over for Chikalim. Sorry, it's 41 has been required. 7 sixes. Rahul will be the last over. The first ball and dot. So the over starts with the dot ball. Score remains on the same, that is 45. Still 41 more runs required in remaining 5 balls for Chikalim strikers to win this match. Kane continues 2 dot balls. After the match has been played between Aryan Panther 77 of Asnara versus Ganpati Warriors of Darbandula. So Vishwas has been retired out. It is the first wicket down. Just 4 balls has been required. Sorry, remaining, and 41 more runs required. Kishore. Oh, again a very good piece of bowling. But so continues 3 dot balls. Still 41 more runs required and remaining 3 balls. Again continues 4 dot balls. Just 2 balls remaining. Match is already in the hands of Aishant Durga of Nirankal. So captain of Aryan Panther 77 and Ganpati Warriors, please come for the toss. No, slight replacement into the leg side. And over ends with a maiden. So congratulations Aishant Durga Nirankal for winning this match. आज एक क्रिकेटीचो लेजंड म्हणपाक जाता, जाणें गोंय राज्याची क्रिकेट मोठ्या दबाज्यान मुखार व्हेल्ली आसा. जावं तो एक प्लेयर म्हणून उसगांव दारबांदोडा वाठारांत भरपूर ऑर्गनायज करता टुर्नामेंट, आनी क्रिकेट मुखार व्हरता आसतना प्रत्येकाक ताणें सहकार्य केल्लें आसा. खंयचेय ऑर्गनायझींग टीम जावं फक्त गणपती वॉरियर्स, उसगांव, दारबांदोडा, मॅच फिक्सिंग, कारापूर अशेंच म्हणना, जाल्यार प्रत्येक ऑर्गनायझिंगाक जेन्ना मदत आसता क्रिकेट मुखार व्हरपाची, तांचे डोनेशनूय आसता, ताजे टिमीय आसता, आनी तो प्रत्येकाक बरोबर घेवन वचपी मनीस. आज दत्तराज गांवसाचो वाडदीस आनी ताका वाडदिसाची उर्बुबळीत परबी आमी कोणेकार चषक ऑर्गनायझर संघातर्फे तशेंच सगळ्या क्रिकेटीचे मोगी आसा त्या सगळ्या कडल्यान ताका बरें आयुश्य आनी बरें आरोग्य तशेंच बरी भलायकी आनी जितलोय धंदो करता तेजे बरे तरेन तागेलें बिझनेस आसा तो बरो फुलूनी
कारण असोच जर तुवें क्रिकेटीन सदांच सगळ्यांक सहकार्य केल्लें आसा ते अशेंच अबादीत रावपाक जाय. त्या खातीर बाबूक वाडदिसाची सामकी खतखतीत आनी उर्बेभरीत परबीं. तशेंच बाबूक विनंती करता, बाबू प्लेयर ऑफ द मॅच तुवें मातसो दिवचो, तुजे हस्तुकी. आता बाबूच्या हातान आमी बेस्ट प्लेयर ऑफ द मॅच प्लेयर ऑफ द मॅच प्रितेशाक प्लेयर ऑफ द मॅच होता फावो जाता. बाबूच्या हातान प्लेयर ऑफ द मॅच आमी दितले. प्रितेश मातसो बेगीन यो. ओपन करते. असनोरा विलेज पंचायतांच्या टिमीचो फोटो चालू आसा आनी तांकांय येवकार करता. तेजे पयलीं प्रितेश यो, तुजे जबरदस्त परफॉर्मन्स 30 रनाची एक बरी स्ट्रायक रेट दवरून 2 इनिंग्स केलो, ताजे खातीर तुका हें फावो जाता आनी परबी तुका. तशेंच बाबूकी वाडदिसाची उर्बी परबी. आनी आज वाडदीस सुद्दां क्रिकेटीच्या ग्रावंडार जावपाकूच जाय आशिल्लो आनी बर्थडे क्रिकेट ना जाल्यार हें शक्य ना. बाबू राव रे मातशें आमगे 2 मिनटां गेली म्हणून कांय जायना. बाबू आयला मेळ्ळा म्हणटकीर 2 फावटी बाबा टिमीक सांगता 2 मिनटां आमी मातशें बाबू कडेन उलयता. बाबू वाडदिसाची तुका उमेदीत परबी. तुका आमी सगळ्या ग्रुपांनी खतखतीत परबी दिल्लीच आसा, पूण आज क्रिकेटीच्या मैदानाचेर बर्थडे गाजोवप आनी बर्थडे चलोवप ही म्हाका दिसता आनी सुखाची गजाल तुजे खातीर. सारकी हरीश, कित्याक म्हाका हांव पणजे आशिल्लो सकाळच्यान आनी आयज सांगलें हांव पावता म्हणल्यार म्हाका आयज कितें आयज म्हाजो बर्थडे म्हाका म्हणल्यार टुर्नामेंट थोडे खेळपाकूच जाय म्हटलें आयज बर्थडे म्हणून. घरा कडेन सगळीं बोवाळ मारता पूण हांव खेळपाक आयला. आनी म्हाका खबर आहा तूं खेळटलो कित्याक पावस वत आमकां कांय लागना आनी बाबू परत एकदां ग्रावंडार खेळटलो कित्याक तूं ऑर्गनायझींग करता आनी तूं भायल्यान सगळ्यांक सपोर्ट करता. पूण बाबू खेळटा तेन्ना बरें दिसता. तर ऑर्गनायझींग करप डिफिकल्ट, खेळप डिफिकल्ट. खंयचो रोल तुका आवडटा बाबू? बर्थडेक एक बरें जावनी सगळ्यांक कळून तुगेली आवड. म्हाका दिसता ऑर्गनायझींग करप सामकें डिफिकल्ट. कित्याक सांग, खेळपाक म्हणजे दुसऱ्यांनी ऑर्गनायज केलो डायरेक्ट आमी खेळटा आनी येता, पूण ऑर्गनायज केला म्हणटकीर सगळ्यांक एम्पायराक सांग, एका कॉमेंटेटर सांग, स्कोरर सांग, ते सगळे रिस्पॉन्सिबिलिटी खूब वाडटा. प्लस टिमीकूय सांग, सगळ्यांक फोन कर केन्ना पावतले केन्ना खेळटले, म्हणजे ते चड टेन्शन आसता. डायरेक्ट खेळपाकूच बरें. पूण म्हाका दिसता हें टेन्शन करप बरें. कित्याक सांग, टिमी करपाचें आनी अंपायर स्कोरर, कित्याक सांग तातूंत ते सगळ्यांचें बॉन्डिंग वाडटा. एकामेक रावता, तूं एकट्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिता, तो एकट्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिता, आनी तातूंत म्हाका दिसता ऑर्गनायझिंगाचो आनी एक टिमीचें बॉन्डिंग फ्रेंडशीप जी आसा ती वाडटा. अशें दिसना तुका? ना, खरेंच बॉन्डिंग खूब वाडटा. कित्याक आतां म्हणजे सांगपाचें म्हणल्यार आतां अख्ख्या गोंयच्यान म्हाका विशीस येयल्या बर्थडे विशीस. प्लस सगळ्या ग्रुपांनी आनी हे सगळें आतां वता थंय बाबू मॅच बाबू गणपती वर्साचो बाबू म्हणून वळखता, म्हणून चड बरें दिसता. गुड लक तुका आनी अशेंच तुका यश आवडटा. फुडल्या तुगेल्या वाटचाल जी आसा ती बरी जावनी. बाबू वयतना कितें दी बट्टा तुयशी. आयस्क्रीम हाड, आयस्क्रीम बर्थडेची आमकां.
दोन्ही टिमीचे एक्स्ट्रा प्लेयर मातशे हांगा धाडपाक जाय कॉम बॉक्सान. आयले हय होय आयलो. बॅटर्स मातशे बेगीन यात. शिवाजी पुणाजी पुणाजानी होऊन येतो. मनोजन पुणाचीच नाही. दो मिनिटे लगेच जा. पुणाची स्ट्रायकर मरे सगळे एकदम सांग 12 प्लेयर सांग 11 प्लेयर. तो कोण बोल पहिले स्ट्राईकला कोण आता? बुनाजी आणि तो मनोज. आता बोल सांग बाकी सांग. रोहन नामदेव सीड शांत So we're all set here for this second game of this second group. Let's see Ganraj beginning against Punaji. Kalangudkar starts off with a short ball and it's been pulled away. That's too easy here for Punaji Kalangudkar. There's no one down towards the long leg region. Punaji is one of the legendary cricketers in Goa. Manoj partnering him at the non-strikers. Ganraj beginning the proceedings. And a great start for Punaji. Not the best of the length here to be bowling to Punaji. Ah, what a strike! There's Punaji Kalangudkar for you. That's gone a long distance. So that is exactly how the bat should come. Right up there, and great swing of the bat, Punaji Kalangudkar. Well, he just now was in... कर मरे स्टेटमेंट इश्यू करपा काय ना प्रॉब्लेम. पेमेंट केले न्ही ताणें इश्यू कर काय ना प्रॉब्लेम. So Punaji, after taking a single at the non-striker end,
Good start, strong start from Punaji. 11 runs on the board. And that's in the air, just eluding that fielder, goes toward the square leg boundary. So they have decided they are going to go hard at Ganraj. These are very good batters. I told you this is a strong team, very strong team. Moves the score to 15. So they have been made to think here. Babu and his team are made to think. Another swing and a miss. So just walking across the stumps, and Ganraj is bowling the power play over. Not easy for anyone to bowl in the power play overs. Just the two fielders kept. One on the offside, one on the leg. You can see there is a slip there at the fielder in the mid of region. Very difficult. He wanted to stop the ball, but before he take the start, he just fallen off there. So that marks the end of over number 1. The score is 16 without loss. Punaji got himself going with that 6 and a boundary. Manoj also getting a boundary. They got a good start. 16 is a pretty good start. So till the time Punaji is there is a lot to worry here for Ganpati Warriors, Darbandora. Winners of more than 250 trophies as an owner, as a player, the Taraj Gaons. And what a service he has done to grow in tennis ball cricket. Not only organization but also getting the community of tennis ball cricket very much together. And I also remember he's won the leather ball cricket tournament as well, the Kurchorem trophy, played in MCC. Yes, just shipped in the air. Chance there, chance, but falling short of the fielder. Yeah, he came hard. I think it's Sahil there fielding at the long on region. But well disguised, very well disguised by the slower off cutter. So he's bowling those off cutters at the moment. So Mayur has been asked to bowl the second over. Normally I see Mayur many a times bowling over number 4 and over number 5. But I think pace off from Mayur is the idea. That's why he's been brought in. In the air, just short, one bounce. They kept the man very straight. This looks to be some plan here to get rid of Punaji Kalangudkar. You almost get to that man. But Punaji will not just stop himself. He will still freely try to play his shots. Bludgeoned across, bludgeoned for 6 runs. Great strike on the leg side in the square leg region. Fielder was there, he took him on and places it nicely. This time Mayur bowled a lower full toss. He tried to bowl a yorker there, missed there, and great swing there from Manoj. This was bowled well, run out on the cards. Direct hit, it will have been gone, and they are going for the second, and it goes for 4 runs. Well. That was a simple take here for Sahil, and he just took his eyes off the ball. No defense is there, and runs down for 4 extra. So it's 5 runs. Yes, it's 5 runs. $29 in total, because you got to see when the Babu picked up the ball and threw it. That point is counted. Yeah, lovely shot. Might get a boundary there. It's a quick outfield. Good chase, but the ball wins the race. Just going for the lofted square drive. Just slicing it towards the backward point region and getting the boundary. Well placed shot. This is good batting there. Playing with the spin, playing with the turn of the ball. Just getting the away from the fielder at the short point region. They are playing with the field at the moment against the bowlers. So it's already a big start here for Aryan Panther 77. No ball.
No ball, no ball. That's yeah, I think he overstepped over there. Not a good sign when the opposition is already on 35 in the second over. That's not a good sign in bowling. Free hit coming up next. And who? For whom? It's Punaji Kalangudkar. You're getting the free hit. In the air, straight in the hands, but it was a free hit. So Punaji just gets a single there, and he will take the strike of the next over. We are done with 236 without loss. Aryan Panthers 77 Asnora. छत्तीस रनों पर यहाँ पे अच्छी शुरुआत की है, बहुत ही शानदार ओपनिंग साझेदारी। और पुनाजी को हम हमेशा देखते हैं कि आतिशी पारी खेलने के लिए वो बहुत ही इच्छुक रहते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ मनोज ने भी काफी अच्छा उनको समर्थन किया है, एक अच्छा सपोर्ट दिया है इस ओपनिंग साझेदारी में। तो अब पुनाजी आए हैं स्ट्राइक पर तीसरी ओवर की शुरुआत में। तो संगम आए हैं यहाँ पे गेंदबाजी के लिए। तो अच्छे गेंदबाज है दाएं हाथ के, लेकिन उनके खिलाफ काफी प्रतिभावान और अनुभवी खिलाड़ी। ये कैच हो सकता है। जी हाँ, वहां पे रनेश तैनात और कैच लिया है। पुनाजी को चलता किया यहाँ पे संगम ने। मैंने कहा था कि युवा प्रतिभावान खिलाड़ी है, सही जगह पर गेंद की पुनाजी खेलने गए लेग साइड में, वहां पे फील्डर तैनात थे और रमेश ने यहाँ पे आसानी से कैच लिया है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। तो पुनाजी यहाँ पे वापस 36 for 1। तो निशांत आए हैं। हालांकि ये बल्ला जो है अलग तरीके से पकड़ते हैं, लेकिन ताकत और काबिलियत में कोई कमी नहीं। बचपन से ही ऐसे ही खेलते आए हैं, तो अब ये बदला नहीं जा सकता और इसी ताकत के साथ वो खेलते हैं और बखूबी खेलते हैं। तो कभी कभी हैरान करने वाली चीजें होती है क्रिकेट में, किस तरीके से हमको सिखाया जाता है कोचेस के जरिए, लेकिन जब आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं हमेशा से, तो बचपन से जब खेला है तो ऐसे रन भी बनाते हैं। ऐसा नहीं कि रन नहीं बनाते, आसानी से रन बनाते हैं। बड़े बड़े इनिंग्स से अभी खेलते हैं इस टीम के लिए और अब आए हैं नंबर 3 के पायदान पर। और इनके लिए स्विच हिट खेलना आसान पड़ता है बाकी खिलाड़ी के लिए, क्योंकि दूसरे लोगों को ग्रिप बदलना पड़ता है। यहाँ पे उनकी ग्रिप जैसे स्विच हिट खेलते हैं उसी तरीके से शुरुआत करते हैं, तो आसान है उनको स्विच हिट खेलना। तो अब मनोज वहां पे नॉन स्ट्राइकर पर, विशांत अभी भी एक डॉट गेंद खेल चुके हैं। ये कैच हो सकता है, कौन लेगा? यहाँ पे फील्डर मौजूद, सीधा ऊपर, और ये देखिए ये उनके हाथ में भी नहीं आया। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सूरज की किरणें जो है वो आपके ऊपर होती है, आपको देखना पड़ता है, और जिस तरीके की धूप है, जिस तरीके की सूरज की यहाँ पे तेजी है, तो कठिन होता है किसी खिलाड़ी के लिए ऊपर देखना और अपनी आंखों को ऊपर रखना। तो अपनी आंखें हटाई वहां पे, तो कठिन होता है भी किसी इंसान को इस तरीके से या ऊपर देखना। इस तरीके की गर्मी और कड़ाके की धूप चल रही है। 37 रन। ये देखिए विद द स्पिन विद द टर्न, फील्डर वहां पे तैनात और दूसरी सफलता। दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों को यहाँ पे पेविलियन में वापस भेजा संगम ने। तो जिसको यहाँ पे मौका दिया है वो उन्होंने बखूबी मौका जो है भूना है यहाँ पे संगम। और मैंने पहले कहा था एक अच्छे खिलाड़ी जिनको जो टूर्नामेंट होती है धारवाड़ोड़ा उजगा में, वहां पे उनको पकड़ा गया था उनका टैलेंट, और वहां से ही उनको खींचकर बाबू ने जो उनको मौका दिया है। गणपति वॉरियर्स धारवाड़ोड़ा के खेमे में बहुत बार अकेले दम पर 2-3 विकेट चटकाते और पूरा मैच का पासा जो है पलटने में काफी सक्षम संगम, और वही इस बार भी किया। जो मोमेंटम था यहाँ पे आर्यन पैंथर 77 के साथ
वो जो मोमेंटम है वो कट कर दिया है यहाँ पे संगम ने। तो विजय ने यहाँ पे कैच लिया है और 37 रन पर 2 विकेट। अच्छी वापसी संगम के जरिए करती हुई यहाँ पे गणपति वॉरियर्स। रोहन सालगांवकर गोवा के जाने माने ऑलराउंडर। ये भी देखिए बहुत अच्छी गेंद, ये भागने की कोशिश, फिराक में थे, रन चुराने के फिराक में थे, लेकिन वहां पे वापस भेजा। विशाल ने कहा कि वो लेफ्ट हैंडर है, दाएं हाथ के हैं और रनअप में थे, नजदीक थे उनकी ही गेंद। तो अभी अभी हमने 2 विकेट खोई हैं और हम आपका भी विकेट यहाँ पे खोना नहीं चाहते, इसलिए विशाल ने उनको वापस भेजा। 37 रन 2 विकेट, क्या ओवर है, बेहतरीन ओवर। अभी तक एक ही रन दिया है और 2 विकेट, 2 बड़े विकेट। ये यहाँ पे चौकी, थोड़ा सा स्ट्रेट डाला यहाँ पे गेंद और ये स्विंग करने का मौका मिला रोहन सालगांवकर को और आसानी से मिलता हुआ लॉन्ग लेग की दिशा में चौका। और इस चौके के साथ यहाँ के तीसरे ओवर की समाप्ति स्कोर है 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आर्यन पैंथर 77, असनोरा। तो अब चौथी ओवर यहाँ पे गेंदबाजी के लिए रमेश आए हैं। ये भी काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, ज्यादातर पहले ओवर में गेंदबाजी करते थे, लेकिन अब थोड़े से विकल्प ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे गणपति वॉरियर्स। चौथी ओवर में गेंदबाजी को बुलाया है रमेश को। अच्छी गेंद, वाइड शॉकर, तो निशान को यहाँ पे 1 रन जुड़ जाएगा। अच्छा थ्रो सीधा हाथ में, और यहाँ पे तो ऐसे ही थ्रो अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर आप 1 बाउंस करते हैं तो कभी कभी यह टप्पा जो है एक्स्ट्रा बाउंस पड़ता है और अतिरिक्त रन आता है वो थ्रो के जरिए। तो ज्यादातर आपको विकेट कीपर के हाथ में भेजना पड़ता है, क्योंकि उनको बैकअप होता है, वरना ना तो आप गेंदबाज के हाथ में सीधा थ्रो कर सकते हैं। तो 1 रन के जरिए शुरुआत की है, स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद जरूर थी, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे ये नो बॉल, क्योंकि ओवर स्टेप कर चुके थे। ये दूसरा नो बॉल, पहले मयूर ने डाला था अपनी ओवर में, दूसरी ओवर में, और इस बार रमेश ने। तो अब होंगी फ्री हिट और मौका मिलेगा। हालांकि गेंद दोनों जो थी बहुत अच्छी थी, वाइड शॉकर। अगर यहाँ पे डालोगे तो किसी भी बल्लेबाज को चकमा देने में कामयाब रहेंगे। ये अच्छी लाइन और लेंथ होती है टेनिस बॉल क्रिकेट में, ज्यादा मौका नहीं मिलता है बल्लेबाजों को। इस बार यहाँ पे लोअर फुल टॉस और यहाँ पे चौका दिया। थोड़ा बेहतरीन एफर्ट होना चाहिए था, थोड़ा अच्छा एफर्ट होना चाहिए था, लेकिन वहां पे उतना अपने आप को झोंका नहीं रमेश ने, रामदास ने लगता है मुझे, और लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और चौका मिला यहाँ पे। आर्यन पैंथर 77 और स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन। और ताकत नहीं थी इस शॉट में, थोड़ी सी मुझे लगता है टाइमिंग और ताकत की कमी, लेकिन विशांत फिर एक बार ट्राई करेंगे, वो वहां पे फ्री हिट का मौका था। इस बार जरूर वाइड, जी हाँ, थोड़ी सी ज्यादा बाहर थी, सफल हुए थे, लेकिन ये गेंद बहुत ज्यादा बाहर डाली थी, तो वाइड करार दिया अंपायर ने। स्कोर अभी भी बहुत अच्छा है, लेकिन गणपति वॉरियर्स के पास भी काफी काबिलियत है बल्लेबाजी में, तो देखेंगे कांटे की टक्कर के आसार है इस मुकाबले में। ये कैच कौन लेगा यहाँ पे? जी हाँ, लिया पॉइंट की दिशा में
रमेश को मारने के चक्कर में यहाँ पे अपने विकेट खो चुके हैं विशांत, और संगम ने लिया ये कैच और विकेट मिलता हुआ रमेश को। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ 49 रन के ऊपर 49 for 3। तो विवेक आए हैं यहां पे नए बल्लेबाज। 49 पर 3, और देखेंगे किस तरीके से ये स्कोर आगे बढ़ता है। बहुत बार हमने देखा है रमेश जिस तरीके से गेंदबाजी करते थे और पहली ओवर डालते थे हमेशा, लेकिन इस बार थोड़ी सी सोच में तब्दीली करके आए हैं गणपति वॉरियर। शायद उनको लगता है कि गणेश जो पुरानी गेंद होती है उस पुरानी गेंद पर ज्यादा कारगर साबित होंगे, इस वजह से उनको चौथी ओवर गेंदबाजी के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। फिलहाल तो अच्छी ओवर ये यहाँ पे, और ये गया, और ये देखिए यहाँ पे मिलता हुआ 6 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन। हालांकि लॉन्ग ऑन तो बहुत वाइड था, मुझे लगता है कि बहुत वाइड था, शायद थोड़ा सा स्ट्रेट होते तो ये सीधा हाथ में थी ये कैच, लेकिन शायद गेंदबाज ने उनको बोला था कि थोड़ा सा वाइड रखने के लिए। 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शॉट, यहाँ पे मनोबल जरूर बड़ा होगा विवेक का। ये कैच और लिया है यहाँ पे शिवाजी ने। तो विवेक यहाँ पे क्रॉस बैट खेलने के चक्कर में एज देकर अच्छी कैच फाइन लेग की दिशा में यहाँ पे पकड़ी है शिवाजी ने। तो चौथे विकेट यानी कि दूसरा विकेट मिलता हुआ रमेश को इस ओवर से। तो 55 रन 4 विकेट के नुकसान पर आर्यन पैंथर 77 उसनोरा। अब आए नए बल्लेबाज अनिकेत, तो ये भी दाएं हाथ के बल्लेबाज है। ये आखिरी गेंद, चौथे ओवर की आखिरी गेंद, और ये देखिए इसको फुल टॉस किया, दे दिया हवाई फायर 6 रन के लिए, सीधा यहां पे 4 व्हीलर के ऊपर मारता हुआ ये बड़ा हिट, और शुरुआत की है अच्छी, और अच्छी समाप्ति नहीं इस ओवर की, यानी कि स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बड़ा शॉट सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, और इसी शॉट की जरूरत थी यहाँ पे आर्यन पैंथर 77 को। पहली 2 ओवर तो उनके खेमे में गई थी, लेकिन उसके बाद तीसरी ओवर संगम ने काफी बढ़िया वापसी की, और लेकिन चौथी ओवर हालांकि 2 विकेट जरूर हासिल किए थे रमेश ने, लेकिन 2 छक्के भी खाए यहाँ पे इस चौथे ओवर में। 61 रन पर 4 विकेट, और अब आएगा आखिरी ओवर। तो जितने कम रन पर रख सके यहाँ पे उतना बेहतरीन होगा, क्योंकि जो आर्यन पैंथर 77 है उनके पास रोहन सालगांवकर, पुनाजी कलंगुटकर और नामदेव सेठ जैसे अच्छे गेंदबाज मौजूद। तो जितने कम रन पर रख सके ये स्कोर, और उतना बेहतर होगा गणपति वॉरियर्स धारमंडोड़ा के लिए। अभी चल रही है फिलहाल 61 रन 4 विकेट के नुकसान पर। रुत्तम आए हैं, रुत्तम गावणेकर, और ये कैच, जी हाँ कैच बहुत बड़ा एज यहाँ पे था, शफल करके यहाँ पे ऑफ साइड में खेलना चाहते थे रोहन सालगांवकर, लेकिन बाहरी किनारा और बाबू ने कोई चूक नहीं की, और उसी के साथ यहाँ पे विकेट गिरता हुआ। तो कोशिशें जारी थी यहाँ पे रोहन सालगांवकर की, लेकिन उनको जाना पड़ा, क्योंकि अच्छी लाइन और लेंथ के साथ ऑफ साइड ऑफ स्टंप यहाँ पे गेंदबाजी की, बाहरी किनारा, बाबू की कोई चूक नहीं, और विकेट 5वीं, और उससे बड़ा है कि विकेट के साथ ये डॉट बॉल भी है। तो बिंदी गेंद अब आए हैं नामदेव, कप्तान इस टीम के, आर्यन पैंथर 77 असनोरा के कप्तान नामदेव आए हैं यहाँ पे खेलने के लिए।
अभी एक अच्छी ओवर की मांग होगी, क्योंकि एक 65-70 के आसपास रखेंगे तो बल्लेबाजी है इनके पास, गणपति वॉरियर्स के पास, तो अच्छा मुकाबला हो सकता है। लेकिन अभी 75 और 80 के पास जाएंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। स्विच हिट खेलने का प्रयास, अच्छी गेंद, आखिरी तक देखा बल्लेबाज के मूवमेंट को, जिस तरीके से स्विच हिट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद रखी सीधा, थोड़ा सा लेग स्टाइल में, थोड़ा सा उनके पैर पर, तो मौका नहीं मिला यहाँ पे उसका फायदा उठाने का। स्कोर 62 रन, 62। अभी भी 4 गेंदे शेष इस इनिंग्स की। बहुत शानदार परखा था उनको, पहले ही मोमेंट, पहले ही स्विच हिट खेलने का प्रयास किया था, अल्टी पल्टी का शॉट, और यहाँ पे नाकामयाब, क्योंकि गेंद जो है वो सीधा अंदर आई और उनके टांगों के बीच में से सीधा बाबू के हाथ में। तो अच्छी गेंदबाजी, परखा था, देखा था मोमेंट। इस बार भी बहुत बेहतरीन, कोई मौका नहीं, शानदार ओवर है रुत्तम की, वापसी करा रहे अपनी टीम को गणपति वॉरियर्स धारबांधोड़ा को। तो देखिए इस ओवर में कुल आए हैं अभी भी 1 रन, लेकिन अच्छी यहाँ पे खत्म भी होनी चाहिए ओवर, जिस तरीके की शुरुआत की है। पिछली बार हमने देखा था कि रमेश ने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन आखिरी गेंद पर छक्का जरूर खाया था। तो फिलहाल रुत्तम की अच्छी गेंदबाजी, ये भी अच्छी, यहाँ पे मौका बनेगा जी नहीं, 6 रन के लिए ताकत थी, अच्छे पॉइंट पर यहाँ पे लगा और मिडल किया इन्होंने ये गेंद, लोअर फुल टॉस को तब्दील किया 6 रन में। स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन, 68। फिर एक बार यॉर्क करने का प्रयास किया था, लेकिन इस बार थोड़ी सी मुझे लगता है कि चूक की, और आखिरी गेंद ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि 1 रन जरूर मिलेगा, 1 रन मिला भी, लेग साइड में यहाँ पे थोड़ा सा गेंद रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसी के साथ इस पारी की समाप्ति, गणपति वॉरियर्स ने अच्छी वापसी की, पहले 2 ओवर में 35 रन जरूर थे, लेकिन उसके बाद संगम के जरिए एक अच्छी ओवर डाली, 2 विकेट चटके, उसके बाद रमेश ने भी 2 विकेट चटके, हालांकि 2 छक्के खाए, और रुत्तम की अच्छी आखिरी ओवर, तो 8 रन देकर इस ओवर को बहुत ही अच्छे से समाप्त किया है रुत्तम ने अपनी टीम गणपति वॉरियर्स धारबांधोड़ा के लिए। 70 रन का लक्ष्य रखा है, 70 रन यहाँ पे चेस करने होंगे अगर गणपति वॉरियर्स अगले दौर में प्रवेश करना चाहती है तो।
So Ron Salgaonkar into the bowling attack with Sahil and Vijay. 70 runs to chase to move into the pre-quarter-final stages. Lovely shot, what a strike. Full ball, inside out, over the covers, safe shot and a good shot. Ron Salgaonkar trying to bowl outside the line, and advantage that Sahil has is he has got good shots on the offside. So Rohan will try to bowl on the off, and he is waiting for a plan where Sahil will go at the non-striker across the line on the leg side. So a good battle is going to be between Goa's top all-rounder, bowling all-rounder, versus a good batter. And that's out. I told you, going across the line was the plan here from Rohan Salgaonkar. Gets the inside edge, goes straight back into the hands of Punaji Kalangurkar as he departs. Sahil goes back 4 for 1. Rushad. Here comes at number 3, young Rushad. So another batter who has been given opportunities just like Sangam. Rushad coming at number 3 ahead of many experienced players. So that shows that Ganpati Warriors puts a lot of value on this player to perform. Lovely shot, but finds the fielder straight into the hands of the short covers. Well bowled by Rohan, just bowls it as full as possible. So can't squeeze it out to lift it over the covers region. Another one, this time almost the same result. Direct hit. Similar sort of shot, almost like a carbon copy of the previous one. But this time just gets a single as Vijay reaches at the striker's end. Good comeback by Rohan Salgaonkar after being hit for a boundary. That is what he is made of, that experience and great variations that he has. Ability to bowl and read the batter. Oh, what a strike. Power and powerful from Vijay. Trying to pitch up the ball against the big player Vijay. He strikes down the ground. Marvelous striking. Moves the score to 11. Well, what does Rohan do now? Yes, an outside edge straight to the fielder at the short tournament region. Wanted to go inside out, just could not reach towards the ball. So decent over both the sides, in fact, well balanced, you can say. 11 for the loss of 1. Sahil goes back, but 11 runs scored by Ganpati Warriors, Tar Bandoda. Soon comes Namdev. Rushad just got off the mark with a single. Vijay has already hit 1-6 down the ground. That was really a class shot. Lot of power, lot of punch. Namdev also is a good bowler. Very tall, gets the bounce, gets those yorkers right. A lovely strike from Rushad. Swinging across the line, a mighty shot. What a swing of the bat. Just a couple of steps, walk across and swinging very hard. Moves the score to 17. I told you these both sides are very strong sides. Winners of many coveted championship. Recently, Rohan Salgaonkar backed the best bowler of the tournament at the Bedkar Trophy, a two-wheeler Fasino.
These players play a lot of cricket and now up against each other. Nicely played, very nicely controlled. At least we'll get a couple of runs, if not a boundary. Rushat is young, so turns around sharply. Very well controlled, I must say. Not going through his shot because it was very close to the body line. He could have maybe edged the ball, extra bounce from the bowler. Just played off the hips there, swivel on the leg. Getting a couple of runs, moves the score to 19. A single, yeah, make it 20. So they already got 9 runs of this over so far from the first 3 balls, and they would like to get another 9 maybe. They should keep up with the asking run rate. It's a 14 runs per over, the asking run rate. So by second over, they should be at 28. Lovely shot, but there's a fielder down, and Rohan Sargaonkar fields it very nicely, safely, puts it back to the bowler, moves the score to 21. Good game on hands. Rushat, there is a man down, very straight for Rushat. Oh, went right in between the legs there. Yeah, he was trying to walk across. How did that miss the off stump? So close, yet so far. Rushat was beaten by an absolute beauty there from Namdev. Yeah, this was wide, way outside, too much outside. So that's why umpire called it wide. 22 for 1. Yes, the batter had shuffled, but still it was outside the second guideline. So umpire certainly right over there. Full toss ball, man down there, should beat him. Yes, it beats him. Gets away with the boundary. Well, he wanted a big strike, 6 runs, just could not middle the ball and gets the boundary. Crucial boundary, I must say, to finish over number 2 is 26 for 1. Ganpati Warriors Darbandora in pursuit of 70 runs. .44 runs required of 18 balls. Quite possible, quite gettable. Who is going to bowl the third over? It's going to be Sid or Punaji. They've got few options there. And who is going to bowl the last over as well? Will be pressure in last over if need to defend somewhere around 15 runs. So Punaji Kalangudkar, he bowled excellently in the United Force India tournament in Darbandora just last week. Bowled those off cutters and leg cutters. It was fascinating to watch. Punaji comes into bowl, and pace off will be the idea. Pace off with those off cutters and leg cutters. Sometimes the quicker one variations is what he believes in. Yeah, wide ball. Slightly wide. Even the batter has shuffled, but umpire saying that the ball was slightly wide. He's explaining over there. So how much he has shuffled and how much was the reach? It's finally umpires to decide. Punaji absolutely not happy with that decision. This time just inside. So this time it goes in favor of the bowler. Shuffling is really nowadays you see in IPL a lot of technology being used for the shuffle. Yeah, this should be wide definitely. This is also bowled outside the line. So far one ball have been bowled, 2 runs, both of the wides. So Punaji will still stick to his plans. Punaji will still bowl outside the line of off stump. So let's see all 3 balls, similar sort of balls. Oh,
Massive strike. This time in the arc. My God, it has hit almost the half of that mountain. What a strike. Absolutely a monster one from the big guy from Darbandura, Vijay. 34 for 1. That's why he has been up the order here. He's a clean striker. He's got the power, he's got the height. And finds the space there. Goes for the switch hit. Read the length early. Picked the length early and played it off the length there. And played it really well, finding the gap towards the backward point region. Pressure right back on Aryan Panther, 77 of Asnora. 38. So it's going after Punaji. Vijay is a difficult customer to bowl at. He's a good striker as well as well bowled. Very well bowled. In fact, outside the line, fuller length. This time he was not short. This time he was fuller, making the batter to drive the ball. There is a protection for him in the deep extra cover region. So if he drives, that fielder might come into action. Wideish ball, straight back to Punaji, nowhere to run. So 12 runs have come of this over so far. 12 so far, 38 runs, one ball left. Just trying to hit the ball too hard on a couple of occasions is what can be seen. Last ball, can Punaji finish well? Lovely bowling there. Beautifully right in the block hole. And just keeps it away for single. So it is 13 runs coming off this over. Ganpati over is Darbandura, 39 for 1 in 3. So 31 runs required in the last 12 balls. Certainly there is going to be a message as well with the water, as Babu has come in with some sort of signal there to Ganpati Warriors Darbandura. Just a 1 wicket has been lost. Just that the game is not out of the hands. Asking run rate was 14. Right now it is somewhere close to 15. So it has not gone beyond the levels. So Sid has come on to bowl. Sid has come when 31 runs required of 12 balls. So what is the plan? I think Vijay is just going to see the open spaces. Seed. High chance of taking the catch. I think it will fall way short. They'll be looking for a couple of runs, turning around very nicely. Throw there and completes this two. Yeah, it's a long boundary, so difficult for the long on and mid wicket to come and take this catch. Falling in no man's lane, gets a couple of runs. They placed a man for the switch hit to stop him playing that shot. So they don't mind him playing the inside out shot. But Sid is bowling from round the wicket. So it will be slightly difficult if he bowling body line. Just maybe struggling a bit here with run out on the cards. Looking for a second. And that also goes. That also goes for 4 runs. And Punaji is now firing the fielder. They are getting 5 runs here. Lucky 5 runs. Sid is telling that was not required, but Punaji went for the wicket of Vijay. Nothing wrong there. If Vijay had gone, then Aryan Panther 77 would have just got a little edge there. But as Vijay comes on strike, 5 runs added. Score moves on to 46. The similar story happened in the first innings when Sahil had missed the throw of Babu at the long off region. Now it's a copy paste here in the second innings. So cricket and life is well balanced. It's same. What has happened in the first inning, a story has repeated in the second innings. So now it is Ewan Stevens. 46 runs for 1 and 24 runs required. Should be out. Taken by in the second attempt by Sid. So Rusha trying to go across the line. Sid has been in good form of lately.
So third wicket going down at 40, second wicket going down at 46 in fact, as the batter departs. So Rushad goes back. So in comes Ramdas, Vijay having a word with him. Crucial over, very crucial over here between both these strong teams. 24 runs still required of 9 balls. Equation in favor of the bowling side. Well bowled, excellent bowling. Yeah, he's angling the ball and the batter is shuffling, trying to swipe the ball from that position. It was a length ball. So far so good from Sid. He has definitely learned the art of bowling the leg cutters, bowling from round the wickets using the angle. Up and over, that's a good shot, might get a couple of runs. The fielder giving the chase and goes away for a boundary. Good shot here from Ramdas. Off the back foot in the extra cover region, beating both the fielders, no chance. 50 up here for 2. So 20 needed of 7. This ball is a crucial ball. If Sid can bowl a dot ball or a single, I think last over you're going to favor Aryan Panther 77. If there is a boundary struck or a 6 struck, then 14 runs or 15 runs is quite gettable here. So let's check out this last ball. That's pulled away. Might get couple of runs. He didn't time the ball well. Should get comfortable couple here. Missed the opportunity. It was short. You could have put it away towards the fine leg for a boundary. Now that marks the end of over. 52 for 2 in 4. 18 runs needed in the last over. Needed of last 6 balls. Pressure will be there on the bowler. Vijay on strike. Vijay, I thought that he lost little bit of energy after scoring those shots. It's not easy. You lose a lot of power and a lot of energy goes down in playing these big shots under these conditions. So how much fuel does he have to get it over the top? Sushant comes in. So Sid's exceptional bowling in the previous over has tilted the match slightly in favor of Aryan Panther 77. But if these first 2 balls, if you strike one big, then Ganpati Warriors Darbandora will be right back in the game. First 2 balls will decide the course of this game. Sushant versus Vijay, the battle. It is very easy to get boundaries here as well. And it's very difficult for the fielders to stop those boundaries. So Vijay marking himself. Yeah, play and a miss. Just going to be single. Just going to be a single there, which will keep Vijay off strike. Well bowled. Just trying to go across the line. It was a fuller ball. Wicket to wicket bowling here. Stump to stump from Sushant. So just 1 run. 17 required. 17 required of 5. Should be out. Should be out. There was a leg cutter given straight in the hands of the short point. And Ramdas departs. So now things are very difficult here for Ganpati Warriors Darbandora. 17 needed of 4. So who is going to come in?
This time no timing there. Should get just a single. So now 16 required of 3. Equation is very difficult now. The Sid has bowled an exceptionally good over. That puts pressure right back. If Sid was scored for maybe another 6 more, pressure would have been there more on Aryan Panthers 77. Now 16 required of 3. It's a tough ask. But Vijay need 1 strike to put pressure on the bowler to earn him in his line and length. He's been accurate so far. Bowled precisely in the wicket-to-wicket region. Yeah, Punaji trying to just fine-tune the fielding. Yeah, he struck it well, straight to the fielder. Yeah, very smartly done. Keeping Vijay in, they knew that Vijay would come at the striker's end, and it's a run out. So now it's 15 runs required of the last 2 balls. 15 needed of the last 2, and in comes the birthday boy. Dattaraj Gawans, Babu, as popularly called, walking on the stumps. Punaji exchanging some words here, and match is well for Aryan Panthers 77. Although it was a very close game, the figures might not show exactly how deep the game was. Babu swinging hard, swing and a miss there, straight in the hands of Punaji. It was a very well balanced game until 3 overs. The last 2 overs have been exceptional for Aryan Panthers 77. Flicked away nicely, should get a boundary, well fielded. Coming in charging towards the ball and restricts the batter. No run taken there. So it all ends well for Aryan Panthers 77. Well played here by Aryan Panthers. Very well fight put up here by Ganpati Warriors Darbandura. But little short of power. They have got experience. They have winning from situations. Aryan Panthers 77, Asnora Village Panchayat team, and once again keeping themselves in the contention, winning the game and entering into the next round. So hard luck for Ganpati Warriors Darbandura as they miss out by a slender margin. But a good battle we have witnessed. Now both these teams are going to play against each other. The team of Aryan Panthers 77, Asnora versus Aishant of Nirankal. Kindly come for the toss, both the teams. So just now the match has been happened between Aryan Panthers 77 versus Ganpati Warriors. So the man of the match. So I request the Sarpanch of Kundam Village, Sarvesh Jalmi, to hand over the man of the match to knockout 22, Mr. Manoj. Kindly collect your man of the match in the hands of the Sarpanch of Kundam Village, Sarvesh Jalmi. So there is a short break of 5 to 6 minutes, and after that there will be a quarterfinal over here between Aishant versus Aryan Panther 77 of Asnora, and that winner will be joining Strong Boys of Takwai for the quarterfinal.
So now the next match has been played between Aishant versus RM Panther 77 of Hasnora. So both the captains please come for the toss. So I request the match referees to take the toss of the next match. कोण जिंकले असणारा So the toss has been won by RM Panther 77. So RM Panther 77 the first Nara won the toss and elected to field. So this is the pre-quarter. And the winners will be joining Strong Voice of Sakwa in the quarterfinal. निरंकाल ते ओल्ड तो चड सोंपता तो आसतलो अशें करून फिल्डिंग हो गया त्यांचं निरंका म्हणल्यार सोंपपा जाय सेम आसा तो नुसतं प्रेस जाता बॉल खूप तसं 5 म्हणल्यार सोंपपा जाय चला
So now the match has been played. That is the pre-quarter. Aishant of Narangal versus Iron Panthers 77. First not of the Iron Panthers won the toss and elected to field. So I request Iron Panthers to set your field and also batsmen of Aishant of Narangal, please send your batsmen. Because after this, there is one more quarterfinal to play, which is between the winners of this match versus Strong Boys of Sakwara, which has been entered into the first session of this today's. That is the first days. It's a very beautiful tournament organized by Sri Ravana Sports and Cultural Club in association with Mr. Mithun Manohar Vaidya. This tournament has been commenced today, that is 29th, which will be end up on 3rd of May 2026. So all the 4 days will be having 1 semis per day, and the semis and the finale will be played on 3rd of May 2026. For that, our winners will be pocketed a cash of rupees 1,77,777, whereas the second finalist will be getting 77,777. Also the lottery coupon, semi-finalist, man of the series, man of the match in every match, best batter, bowler, man of the tournament, that is the man of the series, will also be awarded. These beautiful trophies have been displayed. Red cap code. So Pratham Aishant Rahul are the two openers for Aishant of Narangal. So Rohan will start up this first power play over. And then we start the first ball of from Rohan. The first ball is lofted by Mr. Prathamesh, all the way for the boundary. So first ball has been punished, and it will move on to 4. A very good shot by Aishant of Narangal. First ball has been lofted to the boundary line for 4. Again this time straight to the fielder, just 1 run. Nicely come back after hitting the first boundary in the first delivery for Rohan. Just 1 run has been given in the second delivery, so we'll move on to 5. So Rahul. Oh, this time on the top 8 of the fielder, just 1 run. A very good fielding, just 1 run, total move on to 6. Oh, what a super wide shot, but this time, yes, reached the ball ahead of the field, and it's the first 6 of this inning. Hit it by Mr. Prathamesh, a long one,
In total moves on to, they have been crossed at a figure, moves on to 12. With the progressing first power play over. A superb start for Aishant of Nirankal. Oh, nicely come back by Mr. Rohan. Score remains on 12. Again, this time about the hits in the, and yes, one more boundary. So 4 has been added to the score and total moves on to 16. So after completion of first power play, a very good benefit has been taken by Aishant of Nirankal, made 16 without losing any wicket. So Namdev, the captain of the team, will be bowled the second over. Rahul is the best one on strike. Oh, again, he has been punished. First delivery has been punished. It's a straight boundary from Mr. Rahul. Again, nicely come back by. Appeal for caught behind. Oh, the measure has been neglected. So it's a dot ball after hitting the bound in the first delivery. Nicely come back by Mr. Namdev. Oh, trying to hit it. Slower delivery from Namdev. Again, a consecutive 2 dot balls. Score remains on 20. Again, this time lofted, but there is a fielder. One bounce to the hands. So just 121 is the score. Mr. Prathamesh will face first time for Namdev in the second over. Very good score has been scored in the first over, 16, but this day over just 5 runs has been made till now. Oh, this time he has been shuffled as a result. It's a very good ball. A dot one. Score remains on 21. Oh, Yorker length. Slightly face into the long off. So just 1 run. So after a combination of 2 overs, the average of 11 runs per over is 22 without losing any wicket.
So very good over from the captain of the team. Just given 6 runs in the second over. So 22 without losing any wicket after completion of 2 overs. 3 overs has been remained. At least 50 plus has been the fight score on this ground. 60 plus will be the average, and 70 will be the safer side. So Punaji will bowl the third over. The first ball has been high up in the air, and a very good catch has been taken. So in this way, Prathamesh has been back into the middle. The first wicket down at the score of 22. They are on the 22 for 1. A very good start by Mr. Punaji. Taken a marvelous wicket of Prathamesh. A very simple catch, and a comfortably has been taken by Mr. Gavrish. So Pritesh is the new batsman to join Rahul. Oh, this time high up in the air. And yes, he has been caught and bowled. So continuous 2 wickets has been taken by Mr. Punaji. Score remains on 22 for 2. Gautam. I think it's extras in the form of wide. So total slightly changed, and total moves on to 23. There's a chance for the hat-trick, but now just 1 run. So with a single, and total moves on to 24. Oh, Gainey has been caught, yes. Nicely caught by the wicketkeeper as a result. Total the third wicket down. Sorry, Rahul has been back into the pavilion. So the score of 24, they have been lost the third wicket. Kiran. So Kiran is a new batsman. Gain a road ball. What a comeback by RN Panthers, 77 of Hasnora. So 16 in the first over. 6
in the second over, and just now I think 1 or 2 runs has been came in this over. Very good piece of bowling by Mr. Punaji. Just 3 runs has been given and taken 3 wickets by Mr. Punaji. So total is after completion of third over is 23 for 3. Sorry, 25 for 3. After seeing the first over, it seems to be at least 60 plus will be made in the allotted 5 overs by Aishant Durga. But what a superb bowling by Mr. Namdev and Punaji in these 2 overs. They have been given just 9 runs. That is 6 by Namdev and 3 by Punaji. As a result, total is just 25. Chiri the new bowler. कितें डिसायड केलें तें आमकां कांय खबर ना ताणें कितें डिसायड केलां आनी तें आमकां खबर ना तें कितें उलयल्या तें पयलीं मेसेज पावयल्या आमकां खबर ना. So good one continuous 2 dot balls. Kiran. A full toss one. It might be no, and SL's fielding as a result is a boundary. It's a no, so 5 runs have been added. So score moves on to 30. It is now the second last over is in progress. At least 50 to 60 runs will be the 5 score. $30. 30 for 3 in the progressing second last over. Over to super piece of bowling. Again this time just a single. Just 1 run has been added. 31 is the score. Till now very good over. Just 6 runs has been came in this over. Till now. This time lofted and it might be yes, it's a mighty one. So maximum. The total moves on to 37. Still a very growth in this over. So 37 is the score. Oh, Yorker length. It will be just 1 run. 38. So auto completion of 4 overs is 38 for 3. So in the last over they have to be at least get at least 20 runs. It will be just a safer side in a very fight score. So now it is 9.5 runs per over is the current rate of Aishant Durga of Nirankal. Last over. Sushant will bowl the last over.
First delivery, so Yorker length slightly placed to the leg side. They have been taken one and running for second, and yes, what a running between the wickets. So 2 runs have been taken in the first delivery from Mr. Sushant. It will move on to 39. Sorry, 40. 38 is 40. Trying to hit it, and yes, a very good catch taken. The third. So this is Gautam has been back into the pavilion. So fourth wicket down of Aishant of Nirankal. It is score of 40. Just 4 balls have been remained of this last over. A very good and simple catch has been taken by Manoj. Gaurav is the new batsman. Good one. Slightly pressed to the long off. Just 1 run. 41 is the score now. Just 3 balls. Oh, what a super connected shot. A maximum. So score now jumps to 47. A long first spin. A tall one. Taken full opportunity of his height. Score moves on to 47 for 4. Again a full toss lofted. This time a parallel 6 into the leg side. So they crossed the double, that is 50, and total moves on to 53. It's like a very good score. Now they have been billed. Again, so consecutive 3 sixes by Mr. Kiran. A very good score has been built now. The total moves on to 59. What a target has been given for Iron Panther 27 of Asnara. That is 60 runs at the average that is required. It is 12 runs per over. A very positive over. That is the last over. Lots of runs has been came in this, especially by Mr. Kiran, with the help of 3 consecutive sixes in the last 3 deliveries of this last over. So 60 is the target for Iron Panthers 77 of Asnora to win this match and entered into the quarterfinal to play against strong boys of Stank Valley. They have been waiting from the morning session. Also request Aishant to set your field.
म्हणजे 6:15 म्हणजे फिनिश व्हायला पाहिजे पण त्याच्यानंतर मग सूर्य जातो ना खालती मग एक साईडला ॲडव्हान्टेज मिळते बॉल नाही जाणार मॅच झाले की मग ब्रेक जातो मी एक 5-10 मिनिटं देऊ शकतो बसून जाय ना त्याच काय ना उद्या Target of 60 in mind, and Punaji box in with Manoj. Prathamesh with the ball. It's going to be a cracker of a contest here between the two sides. I think Aishant Durga will be pretty happy. They need to get Punaji out early. And if they can get Manoj, that will be the best start they can get. Those 3 sixes from the bat of Kiran has given them a ray of hope. 60 is not a small total. It's not a very big total, but it's a defendable total. So they got to fight it out, take the chances, get Punaji out early. Oh, lovely shot. Just a swipe at it towards the square leg region. Full toss ball, converted, very tightly timed, no fielder there. Good placement, and that's Punaji Kalangurka special here. Oh, that was just in the air. Short of the fielder. Good attempt there. Diving in front. He knows how important, how invaluable and how priceless this wicket of Punaji Kalangurka. That's why he dived in over there. Just falling short of him. Dot ball. Lovely shot. That's great batting skills. Lifted it over the mid-on region. Beats the fielder at mid-on as well as the running fielder from the long-off region. Great placement from Punaji. Great timing. 8 runs, no? So dot ball, a boundary in the first over against Prathamesh. Wrong ball. Try the Yorker, but Punali just whips it away on the leg side in the square leg region. Majestic batting there from Punaji. Using the depth of the crease. Is very strong over there. Strong wrist of Punaji Kalangurkar. What's the score of 14? It's just a treat to watch this stalwart, this legendary player watching like this. Another one. This is vintage Punaji Kalangurkar. Absolute vintage. How good this has been. Prathamesh saying what I've done wrong over here. He's trying to bowl the Yorkers. Punaji is just swinging the bat. Great timing and belligerent approach. It's already 20 runs on the board after the loss of no wickets in the first over. Punaji is looking very strong. He is one of the Goa's finest tennis ball cricketers. Just yesterday, I think day before yesterday, he was in Mumbai for the PSPL, Pratap Sarnaik Premier League, captaining Goa team. Although Goa team did not perform as well as we would have hoped for. Punaji comes back and now on 29th, very first day, plays here. Well ball, angling the ball away. Starts off with the dot ball. Sarvesh bowling the second over. Well bowled, very well bowled. Angled the ball away, went towards this ball. The ball turned away sharply and taken by the keeper behind. So it's Manoj who departs. It's 20 for 1.
So good skills. The bowler has Sarvesh is just rolling the ball in his fingers and trying to just bowl those cutters. Vishant comes in, missed his chance in the previous game, just got a boundary and departed early. Now will look to just give company to Punaji Kalangudkar, the wrong-handed batter. High chance, there's a fielder down there, straight in the hands. Vishan goes back, departs of the very first ball. Sarvesh striking 2 in 2, and Aishant Durga Nirankal are in this game. Very first ball just went hard, trying to hammer the ball, got the elevation. These are big boundaries, and the man was placed nicely. He was stationed there at the long on, takes it very cleanly. Back-to-back wickets. Sarvesh will be on a hat-trick next time. So let's see what comes out here. The discussion is going on.
just need to update here. Anish had come on almost after the third over, and that's why the fielders feel maybe rule has to be applied, but umpire just communicating with the fielding side Aishant Durga as per the rules and laws. So let's understand and let's get some message here from inside what is happening. So they are trying to just discuss here whether he is allowed to bat. This is the discussion going on. So score moves on to 20. In the progressive second over count is going to 2 wickets for Sarvesh. Anish is the new batsman on strike. Altogether they require 60. So 40 more runs required in the remaining overs. For and Panthers 77 overs Nora. Oh, very short, just a super piece of fielding over here. So just one run. And total moves on to 21. So just one run has been given this pure delivery from Sarvesh. Nicely come back. So just one run has been given in these 4 deliveries. Oh, what a super piece of bowling. Even Punaj is not able to get it. Superb, just one run has been given till now in this over. Very good comeback after getting 20 runs in the first over. Just one runs game. Clicking it nicely but finds the fielder. Punaj is looking good with his timing. And so that is the end. The score is 22 for the loss of 2. So I'll just update the rule here for the batter coming at number 4. The rule says he came in over number 4. He came in over number 4, but he was not allowed to bowl immediately. He has to spend that much of time on the crease. So he has spent almost 9 minutes while bowling. And plus the innings break of 2 to 3 minutes. So another first over, so another 4-5 minutes. So he's already spent 15 to 16 minutes without any action. So that's the reason why he was allowed to play at number 4. And hits away across the line, swinging very hard. That's the big shot. Punaji Kalangatkar looking in ominous touch.
and dangerous looking Punaji Kalangudkar in such a good form. .32 runs required in 17 balls. Need to strike one more. Need to get Punaji Kalangudkar out if they need to make a match of it. Oh, that's another one. Punaji coming into the line of the ball, swinging across, played it towards a long leg region, picking up the length, picking the line as well. Back-to-back sixes, pressure right back on Aishant Durga. 34. That's over the top and gone for 4 runs. So there's Punaji Kalangudkar raging on. What an innings here, explicitly good. 38 in just 2.3 overs. Punaji is playing on 37 in just 11 balls, and this includes massive 4 sixes and 3 boundaries. And he's unstoppable in this mood. That's nicely done. Down the ground. He's looking for a big innings. He's looking for the finish here. He's already picked up 3 crucial wickets. So undoubtedly, if they win this, he is easily going to get the player of the match. 38 for 2. 39 for 2 in fact. 21 runs required of 14. Equation not difficult. Make that another one. Yes, that's gone. That's the batter Anish striking his first 6 over the top. Looks very easy now for Aryan Panthers 77. 15 runs required from 13. In the air, high. Chance of taking a catch. Difficult one. Lands safely. 2 runs taken. Well run. So that marks the end of over number 3 is 47-2. So it looks very easy at this stage. 13 runs required from 12. So I'll just update that point, that rule that has been applied by the officiating umpire. It is the amount of minutes without action, either in bowling or batting, that has been spent by the player that was considered. So he was not allowed the bowling because he didn't come up in action for the first 12 or 14 minutes. He spent almost 10 to 11 minutes while fielding, and then another over. So almost he came in the second over, that by the time almost 15 to 16 minutes had gone in the game, so he could come in action. So should go for a boundary. Yes, played away. It was an off cutter. Played it with the turn, with the line, and played it towards a long leg region. So gets the boundary. Moves the score to 51. So looks very easy now. 9 runs of 11 balls. Punaji on 42. Can we see a half century? He can certainly. The way he is in full flying colors. And yes, gets it over. Gets it over towards the backward point. Lot of width given, short, wide, and slices the ball for a wonderful boundary from Punaji. 46. The legendary player moves on to 46. Just 1 shot away from the half century run mark. Team requires 5 runs. Punaji required 4 runs. That's well stopped. Trying to punch the ball on the offside. Gets the edge there. Running down towards the third man. Picks away on the leg side. Could not get the elevation. Punaji looking for a couple. And gets a single. So it's a early finish here. Once Punaji is there on the wicket, 47. 4 runs required. Punaji at non-striker's end. What the batter is going to do? He's going for the big one.
No, he's just getting to take a single. Very smart, very nice. Playing for the teammate, playing for the partner. Very important. He is reaching to his important milestone. A feat here. Half centuries come very rarely in tennis ball cricket in 5 overs game. So that's why he's giving opportunity to his legendary player. And gets the half century and gets the victory as well. A strong square cut here from Punaji and a strong innings with a strong finish. We got an early finish here as Panther 77 win comprehensively by 8 wickets, and it's undoubtedly the great show. It's a Punaji Kalangudkar show here today with 3 wickets and a marvelous half century. Well, it was treat to watch him bowl and it was treat to watch him bat. It's Punaji Kalangudkar reigning supreme at this tournament organized by Sri Ravnath Sports and Cultural Club is Ami Kunekar Chachak. Wonderful Punaji Kalangudkar. It was great to see you. अरे पण तू तुझ्याकडे उलव ना तो ऑन फील्ड ऑलरेडी आपण सर्विस केली स्पीड नाही राव आणि आता बॅटिंग एक ओव्हर बेस्ट तो की म्हणता माझ्या चांगल्याने ओव्हरचे म्हणता बरा आपण कॅप्टन आहे म्हणजे तुमच्याकडे बॅटिंग केला पण त्याला म्हटलं अंपायरने ऑलरेडी इन्फॉर्म केला आम्ही ना टाइम वर दाखला मर का ना रे यांच्यानी मरे लिस्ट आहे अंगण मरे मॅच स्टार्ट जाऊचा पण मरे प्लेइंग 11 लिस्ट पडो मी तुला किती क्लियर लिस्ट हाडूंग ना ते मिस्टेक आई इंका पण विचारला लिस्ट नागा विचारला इथे विचारला इथे ते इम्पॉर्टंट प्लेइंग आहे ते मागाने बावा नका नको वेगळं रूल लावून घे करपा जावंका मान किंवा बरिंग करपा ना इकडे हांगा सोडून उठलो कर पासवर्डीच नाही ना और कोणाक दिसलो हां हां तू दिस Now the man of the match of this match, a marvelous 50 not out and 3 runs and given taken 3 wickets. Mr. Punaji Kalangudkar, please come and collect. You are the man of the match. पण होईल ना सांगतो बरं तुम्ही आहे ना कोण ना ए भाई पिच पे डाल मत किती वर 5 वर ना टॉस झाला ना नाही आर्यन हे ना स्ट्रॉंग बॉल फिल्डिंग ना नाही टॉस झालाच नाही तिकडे कसं गेले ते टाइमपास असतं ना टॉस घेऊ पाणी बाय रियाज रियाज So for the captains,
The strong balls of Sankwal and Aryan Panther 77 overs. Nara, please come for the toss. Now the big quarterfinal which is played between a strong bus of Sakwale, which has been entered in the first session of today's first day, and now this of the second session. Aryan Panther 77 of Hasnara just now defeated Aishant Durga of Nirankal. And of the toss has been won by Aryan Panther 77 of Hasnara. And what's the decision? डिसिजन किरे फील्डिंग डिसिजन अब ऐसे मरे मनुष्य ना तो तुम ना शेष आणि ना बोले थे हां आणि ना तो क्या कहते हैं बोल रहे को उठल्या आणि असं लईचा एरा बेटा खंयतरी एक बॉल आसा ना ना ओल्ड बॉल कितें ओल्ड बॉल ना आसूं न्ही आं बरें ना मागीर सांग ओके मागीर सांगा दोन दवर तुका दोन बॉल त्यांचे दवरल्या दोन त्यांचे दवरल्या हे ओल्ड बॉल दोन आसा बॉल उरल्या कितले मॅच कितले एक लास्ट मॅच मरे बॉल कितले गेले खंय रे बॉल आसा मरे दोन बॉक्स आसा रे कितले आले बॉल दोन दोन बॉल याद नाका मरे सगळं चाल त्यांचे So Aryan Panther 77 won the toss and elected to bat, I think. शेड पुढे पावत नाही आणि आपल्या नाव बरें काळ जाल्यार मजा येवपाना चा घेता नेक्स्ट वर्क बेगीन दवर बाबा अरे सांगता कितें आमचे तो येता आनी कितें करता सांगपा आमी आनी दुसऱ्याक आपयना जाणा आपयल्यार अशें कितलेशे येतले आमचे आमी दुसऱ्याक आपयत ना मार्चान बिर्चान दवर पयलीं सांगता तो म्हाका येना हांव फुडें आसता पळय थंय पळय
लोक येता कोणी भुरगे पयलीं सांगता एग्जामी कडेन येनाका तुमचे येनाका ते डोनेशनाक वयता न्ही ताका लागून सांगू शकता तो एग्जामी कडेन बी येनाका म्हणटा कितें टुर्नामेंट आनी हांवें मुद्दम त्या टायमार दवरप म्हणजे रॉंग म्हणून म्हाकाच दवरचो पडटा तसो डिसेंबर मरे वर्साक 2 जातले वर्साक 2 जातले वर्सा 2 म्हणून काय ना सीझन न्ही आमी सिझनान धरता न्ही डिसेंबर ना जानेवारी तूं कशें आसा आतां मरे तूं सांगू हो टायम जो आसा पळय एप्रील एंड आनी मे फक्त फ्लड लायट कळ्ळें तुका दिसाची मरे बेर करपाक सामकी खूब डिफिकल्ट आनी आमकांय डिफिकल्ट आमकांय ते खेळा भितर तुका कळना रे आतां म्हाका म्हाका मॅच खेळ म्हणून सांग खेळटकीर म्हाका व्हडलें कांय जायना ग्रावंडार कांय जायना हांगा बसतकीर चड आसा हो पळय युट्यूबाक बरो पडपा आमी तेवटें घालतालो आतां धाडा मात ओपनिंग स्ट्रॉंग बॉयज ना एक्चुअली कशें रूल सारको आहा ताणें लायला तो तेणें सारको केला तो रूल सारको केला ताणें टायमींग नाही लायला आनी तो 11 मिनटां पयलीं आनी 2 ओवर जाल्यो एक पयली ओवर जाली 3 ओवर जाली सो ही वॉज इन विदाउट एक्शन न्ही So we are all set. हम तैयार हैं यहाँ पे ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला पहले दिन का क्वार्टर फाइनल पहला क्वार्टर फाइनल आमिर का चषक का 12th मैन 12वें खिलाड़ी सोहेल यहाँ पे शुरुआत के लिए पुनाजी कलंगुटकर और मनोज स्ट्राइक पर ओपनिंग बल्लेबाज तो तैयार है क्वार्टर फाइनल का मुकाबला सोहेल आ रहे हैं पहली गेंद लेकर अच्छी गेंद आगे डालने का प्रयास गति है इस गेंदबाज के पास मैंने पहले ही कहा था ये खिलाड़ी जो है वह बहुत ही खास खिलाड़ी है पुनाजी कलंगुटकर जिसके पास बहुत अच्छे शॉट्स है और तकनीकी रुख से भी काफी सक्षम और जिस तरीके से उनका बल्ला आता है बल्ले का स्विंग है कम ही ऐसे बल्लेबाज होते हैं जो आसानी से चौके और छक्के बटोरते हैं और 50 रन की पारी के बाद मनोबल तो काफी ऊंचा होगा जरूर बहुत ही लाजवाब गेंद लाजवाब यॉर्कर करने का प्रयास लेकिन यहाँ पे इस सतह पर इस इनफील्ड और आउटफील्ड पर गेंद आपको हाथ में आना थोड़ा सा मुमकिन नामुमकिन है क्योंकि गेंद जो है काटा बदलता रहता है और इस वजह से फील्डर्स को थोड़ी तकलीफ होती है यहाँ पे इस मैदान पर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी दोनों के दोनों आगे डालने के प्रयास से लगभग यॉर्कर गेंद तो पुना जी को जब मौका नहीं मिलता है बाएं खोलने का तो आप कह सकते हैं कि दोनों बहुत ही शानदार गेंद और अच्छी शुरुआत यहाँ पे की है तो अब आए हैं रायात के बल्लेबाज पिछले मुकाबले में उतना कारगर साबित नहीं हुए लेकिन इस मुकाबले में थोड़ा सा प्रयास करेंगे जरूर कि अच्छा स्कोर यहाँ पे करे तो मनोज अब स्ट्राइक पर बहुत अच्छी गेंद बहुत लाजवाब गेंद यहाँ पे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप और सोहेल एक स्ट्राइक बॉलर है स्ट्राइक गेंदबाज और प्लान की तरह गेंदबाजी करते हैं मुझे बहुत ही सराहना करनी पड़ेगी इस गेंदबाजी की जिस तरीके से उन्होंने पहले 2 मुकाबले जीते हैं बहुत अच्छी लाइन ऑन लेंथ सटीक और यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं गेंदबाजों के लिए अगर अच्छे बल्लेबाज हो तो आप क्रीज का इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी से चौके और छक्के मिलने में आसानी पड़ती है क्योंकि आउटफील्ड भी बहुत तेज है बल्लेबाज को मदद करता है लेकिन जिस तरीके की असरदार गेंदबाजी हमने देखी है इस टीम की बहुत सराहना करनी पड़ेगी इस बार शॉट डाउन द ग्राउंड दीपक पत्रो यहाँ पे मौजूद
तो अब पुना जी और सोहेल के बीच में फिर एक बात देखिए, सब की सब गेंदे जो है आगे डालने का प्रयास, यॉर्कर लगभग यॉर्कर। तो इस शॉट को ऊपर खेलना उतना आसान नहीं होता है जब गेंदबाज के पास गति होती है। कोशिश करते हैं पुना जी की ये लिफ्ट करे, ऊपर खेले यहाँ पे लेग साइड में, लेकिन अंदर जो डाली है गेंद वो ऊपर खींचना इस गेंदबाज को उतना आसान नहीं है। तो अंडर ये देखिए, ये बहुत ही कलात्मक और क्या फील्डिंग यहाँ पे, लाजवाब फील्डिंग। मुझे लगा था कि मैं यहाँ पे बोलूंगा कि चौका है, चौका जाएगा, लेकिन रोका इस गेंद को, परखा था वहां पे और पहले ही तैयार थे। खूबसूरत फील्डिंग। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है सिर्फ 4 रन। बहुत ही बेहतरीन ओवर, मजा आया इस ओवर को देखकर कि यह गेंदबाज कितना हावी पड़ सकता है अगर सही से सोचे, सही से एग्जीक्यूट करे तो चीजें बहुत मुश्किल कर सकते हैं गेंदबाज बल्लेबाजों के लिए। और वही सोच है, वही सोच के साथ आए यहाँ पे सोहेल। विकेट तो नहीं लिया है लेकिन बांध के रखा है बल्लेबाजों को। तो अब दूसरी ओवर, जिन्होंने भी पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी, नंदेश आए हैं दूसरी ओवर लेकर। तो मुझे लगता है सुनील आए हैं अभी, थोड़ा सा अब और स्ट्रांग दिख रही है टीम, स्ट्रांग बॉयज। यहाँ पे दीपक है, जब फील्डर मौजूद तो उनको भेदने का तो आप सोच नहीं सकते, बहुत ही लाजवाब फील्डर है। तो एक ही रन जुटेगा, कितना दबाव होगा पुना जी कलंगुड़कर, जिस तरीके से पहले ओवर पूरा स्ट्रांग बॉयज के खेमे में गया। अगर स्ट्रांग बॉयज यहाँ पे क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी तो दो गोवा के दिग्गज प्लेयर्स जो आज दिखाई नहीं दे रहे वो उनके खेमे में आ सकते हैं सेमीफाइनल में। और देखिए पुना जी स्विंग क्रॉस किया और शानदार रिजल्ट यहाँ पे। ये स्विंग, इसी स्विंग की बात कर रहा हूं मैं। क्या स्किल्स है इस बल्लेबाज की, जिस तरीके का स्विंग है उनके बल्ले का, आसानी से यहाँ पे लेग साइड में खेलते हैं। हालांकि गेंद बुरी नहीं थी, ऑफ स्टंप के बाहर रखा जरूर था, लेकिन ये पुना जी की ताकत है। तो पुना जी जिस तरीके के लय में हैं और जिस तरीके से खेल रहे हैं फिलहाल, उनको यहाँ पे आउट करना काफी लाजमी और जरूरी इस टीम के लिए। ये अक्रॉस गेंद डाली गई थी, अच्छी गेंद है, जरूर इसको एंगल किया और आगे डाला। तो कह रहे हैं पुना जी को कि आप इनसाइड आउट कवर शॉट खेलिए, वहां पे मेरा फील्डर मौजूद है। इस बार भी यहाँ पे स्विच हिट खेलने का प्रयास, हालांकि ये शॉट ऑन था क्योंकि यहाँ पे फील्डर के अगर बाजू में जाती, ऊपर से जाती तो चौका मिलता, तो शॉट सिलेक्शन गलत नहीं, लेकिन चूंकि वहां पे पुना जी कलंगुटकर तो लेग बाय के जरिए आता हुआ 1 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 12। दूसरी ओवर जारी, 4 गेंदे डाल चुके हैं यहाँ पे नंदेश, एक 6 रन उनके खिलाफ लग चुका है पुना जी के बल्ले से। लेकिन अभी भी ये देखिए, ये ताकत भरा स्ट्रोक, देखते रह गए यहाँ पे दीपक, कोई भी मौका नहीं यहाँ पे, 6 रन के लिए सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में। तो अब इसके बाद ये स्कोर कुछ अच्छा दिख रहा है यहाँ पे स्कोर बोर्ड पर। 18 रन, 2 छक्के आए हैं दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से। ये बहुत बाहर, यहाँ पे देखिए ये रोकने की प्रयास और रोका जरूर।
तो 2 रन जुड़े गए, देखेंगे। जी हाँ, वाइड। ये विकेट के पीछे था, बहुत बाहर था, इस वजह से वाइड, यानी कि 3 वाइड रन जुड़ेंगे यहाँ पे। स्कोर बढ़ता हुआ 21। तो देखिए, जब बल्लेबाज इस तरीके से बड़े शॉट खेलता है और सफल होता है, कितना दबाव बनता है गेंदबाज के ऊपर। बाहर करने का जो प्लान था वो बहुत बाहर हुआ। अच्छी गेंद यहाँ पे, स्विंग अक्रॉस द लाइन, रन आउट की कोशिश, और यहाँ पे जी हाँ 1 ही रन मिलेगा। हालांकि रन आउट पूना जी को करने का था, अवसर था, इस अवसर को गंवा दिया और 1 रन मिलेगा। तो इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। ये अच्छा ओवर, 18 रन आए इस ओवर से 2 छक्कों की मदद से, 2 सिक्सर्स दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से आता हुआ 1-1 सिक्सर। तो अब जो रिक्वायर्ड जो रन रेट है फिलहाल चलता हुआ 11 रन प्रति ओवर। बाईस रन फिलहाल चल रही है यहाँ पे अमी पुणेकर असनोरा की टीम, आर्यन पैंथर 77 असनोरा की टीम। और देखेंगे अब आगे का लेखा जोखा 3 ओवर में किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। हालांकि एक भी विकेट खोया नहीं है, तो अच्छी साझेदारी यहाँ पे। पहला ओवर तो गया था यहाँ पे गेंदबाजी की टीम स्ट्रॉन्ग बॉयज के खेमे में, बहुत ही शानदार लाजवाब ओवर डाली थी वो सोहेल ने, लेकिन उसके बाद नंदेश पहली बार यहाँ पे महंगे साबित हुए। 18 रन खर्च किए उन्होंने अपने ओवर में, और इस वजह से अब स्कोर कुल 22 रन। अरुण आए हैं, पिछले मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच अरुण अब आए हैं गेंदबाजी में। अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन ये जो बल्लेबाज है दोनों, तो वहां पे थोड़ी मुझे लगता है उतनी आसानी नहीं होगी गेंदबाजों को। काफी सक्षम खिलाड़ी, प्रतिभावान, बड़े शॉट खेलने में माहिर और बड़ा एक्सपीरियंस, बड़ा अनुभव भी है इन दोनों बल्लेबाजों के पास। बहुत सारे टूर्नामेंट में सेमीफाइनल, फाइनल तक पहुंच जाती है असनोरा पंचायत की टीम। तो आप देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अरुण आए हैं राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज को मनो स्ट्राइक पर। और ये देखिए यहाँ पे मौका, कैच, जी हाँ ले लिया है, सचिन ने ले लिया है। बहुत ही अच्छे फील्डर है, और ऊपर गई, स्विंग किया था, थोड़ी सी धीमे डाली ऑफ कटर, और इस वजह से उनको वो ताकत नहीं मिली। सचिन की बहुत शानदार कैच। पहले वो थे वहां पे शॉर्ट टर्मिनेट की दिशा में, वहां पे चौका बटोर बचाया था, सिर्फ 1 रन दिया था। शॉर्ट फाइन लेग से डीप थर्ड मैन तक उन्होंने दौड़ लगाई थी, और अब उनको डीप मिड विकेट की दिशा में तैनात किया है कप्तान ने, और कप्तान को नाखुश नहीं किया अपनी फील्डिंग से। तो अब 22 रन पर गिरता हुआ पहला विकेट, और अब आए अनीश मैदान में। तो अब आए हैं अनीश मैदान में, और शुरुआत तो अच्छी की है यहाँ पे अरुण ने, क्योंकि विकेट मिला, दाएं हाथ के बल्लेबाज को चलता बनाया। अब दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। अनीश स्ट्राइक पर, ये जी हाँ बहुत बार, हालांकि सोचा था कि बल्लेबाज सफल होंगे, लेकिन उतने ज्यादा हुए नहीं जितना की सोच थी। वाइड करार दिया, स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। तो कुछ उसी तरीके की फील्ड है जिस तरीके से बाकी बल्लेबाजों को सजाई गई है। एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर तैनात। तीसरी ओवर जारी इस क्वार्टर फाइनल की। हमीकोनेकर चषक जो श्री रवलनाथ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब ने आयोजित किया है यहाँ पे खुणे के मैदान पर।
ये देखिए ये कैच, कौन है उसके नीचे, नंदेश छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, और फिर एक बार मैदान के बाहर मारने के प्रयास में और एक का विकेट खोती हुई यहां पे आर्यन पैंथर 77। अनीश जाते हुए बिना कोई खाता खोले पेविलियन में वापस 23 रन पर दूसरी विकेट यहां पे खोती हुई। यानी कि 2 गेंदे हो चुकी हैं तीसरे ओवर की। हालांकि बीच में एक वाइड जरूर था, लेकिन दोनों की दोनों विकेट हासिल करने में कामयाब अरुण। तो जिस तरीके से उन्होंने पिछले ओवर में या पिछले मुकाबले में यहाँ पे गेंदबाजी की थी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, 2 विकेट चटके थे और सिर्फ 3 रन देकर। और मुझे लगता है कि उनको जहां पे ये सतह है, जिस तरीके की विकेट है, वो इसे कैसे गेंदबाजी करनी है और कहां पे टप्पा डालना है। और दोनों के दोनों जो है स्लोअर गेंद किए थे और इस वजह से बल्लेबाज को गेंद आया नहीं बल्ले पे, थोड़ा सा यहाँ पे पहले ही खेल चुके थे बल्लेबाज और इस वजह से गेंद जो है वो ऊपर चली गई। तो थोड़ा सा तब्दीली करते हुए यहाँ पे विशांत के लिए तो एक जो है फील्डर डीप बैकवर्ड पॉइंट में तैनात। जी हाँ, ये वाइड है और देखना पड़ता है बल्लेबाज अंपायर को कि कितनी सफल हो चुकी थी बल्लेबाज, तो ये अंपायर पर ही छोड़ना पड़ता है। वरना आजकल आईपीएल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप उस तरह की टेक्नोलॉजी हम टेनिस क्रिकेट में तो फिलहाल यूज नहीं कर सकते, बहुत महंगी पड़ती है वो। तो अंपायर का सहारा और अंपायर जो भी निर्णय ले ले वो मानना पड़ता है सभी को। बहुत अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद, और ये देखिए ये चूक यहाँ पे और रन मिल सकते हैं। और सुनील उतने और यहाँ पे भी पहुंचे। ये मुझे लगता है खराब थ्रो था, थोड़ा सा तेज थ्रो अगर जाता तो आउट होते यहाँ पे विशांत। तो बैकअप नहीं था, बैकअप होना चाहिए था, किसी को बैकअप करना चाहिए था। मुझे लगता है कि मे भी शायद शॉर्ट फाइन लेग सुनील को शायद बैकअप करना चाहिए था, बैकअप नहीं था वहां पे। कितना है? तो 3 रन जुड़ चुके हैं खाते में। जब गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करता हो तो उनको यहाँ पे अच्छे से मदद करनी चाहिए, फील्डर्स को अपना संतुलन बनाए रखना चाहिए, अपना दिमाग का गेंद के अंदर रखना चाहिए। छोटी छोटी चीजें काफी महंगी पड़ सकती है। जी हाँ, इस बार भी काफी बाहर सफल हो चुके थे, लेकिन कितना सफल हो गए, दूसरी गाइडलाइन के बाहर है या नहीं है, ये सब चीजें अब वही कह रहा हूं कि अंपायर पर छोड़ना चाहिए। तो फिर एक बार डालनी होगी ये गेंद। कभी कभी ये सफल और वाइड जो है कभी कभी बल्लेबाज के पक्ष में जाता है, कभी कभी गेंदबाज। और ये अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद, यहां पे अच्छी संपर्क नहीं हुआ यहाँ पे बल्ले का। तो कोशिश है कि पुनाजी कलंगुटकर का विकेट अभी भी उनको बांध के रखा है। जिस तरीके के पिछले मुकाबले में खेले थे उस तरीके के यहाँ पे जो स्ट्राइक रेट है वो दिखाई नहीं दे रही है। स्कोर फिलहाल 28 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 28 पर चल रही है आर्यन पैंथर्स। ये देखिए गलती, जी हाँ गलती है, बड़ी चूक है। तो हाथ से छूटी हुई गेंद, ये जरूर उनकी सोच नहीं रही होगी। कभी कभी गेंदबाज के बल्ले से हाथ में छूटती है गेंद, स्लोअर बॉल डालने का प्रयास करते हैं और कुछ ज्यादा ही प्रयास करने के चक्कर में यहाँ पे नो बॉल कर बैठे। तो अब आई है फ्री हिट। ये भी यहाँ पे देखिए सही संपर्क नहीं, क्योंकि धीमे कर रही है गेंद। अगर तेज करते हैं तो जो पुनाजी कलंगुटकर है उनको
गति से अगर गेंद किए तो उनको अच्छा लगता है, क्योंकि गेंद बल्ले पर तेजी से आता है, बल्ला भी तेजी से घुमाते हैं। लेकिन अरुण ने काफी किफायती गेंदबाजी की है और विचार पूर्वक गेंदबाजी की है। जानते हैं कि स्लोअर ऑफ कटर या लेग कटर डालेंगे और सही टप्पे पर गेंदबाजी डालेंगे तो यहाँ पे लाभदायक होगा, और वही हुआ है, असरदार रहे हैं इस मुकाबले में। 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर आर्यन पैंथर 77। पिछले मुकाबले में इसी वक्त पर उनका स्कोर 35 था 2 ओवर की समाप्ति के बाद, लेकिन इस मुकाबले में अभी भी अच्छी तरीके से पकड़ बनाए हैं गेंदबाज। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, क्योंकि बाहर डाली थी, फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव करने के चक्कर में बल्ला जो है, बल्ले का मुंह जो है वो बंद हुआ, इस वजह से लॉन्ग ऑन की दिशा में गई। और अच्छी ओवर यहाँ पे अरुण ने, हालांकि एक नो बॉल 2 वाइड बॉल डाली जरूर थी, लेकिन चौका और छक्का यहाँ पे दिया नहीं। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ 9 रन दिए इस ओवर में और स्कोर है 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब आए हैं यहाँ पे गेंदबाजी में उमर बॉयज ने किया हुआ बहुत बड़ा आयोजन। उमर बॉयज का मार्मुगोआ प्रीमियर लीग, और मार्मुगोआ के प्रीमियर लीग में सबसे बढ़िया गेंदबाज रहे थे। अब काबिल तारीफ और काफी दबाव झेला था उन्होंने, जब बड़े बड़े साझेदारियां उन्होंने तोड़ी थी और अच्छे बल्लेबाजों को आउट किया था। अब चौथी ओवर गेंदबाजी के लिए अब वो आए हैं यहाँ पे। अच्छी गेंद, हालांकि लेग कटर नहीं थी, थोड़ी सी मध्यम गति की गेंद थी, ऑप्शन के बाहर, बैक ऑफ द लेंथ। तो स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन के साथ 32 फॉर 2। पूर्णाजी कलंगुटकर आखिरी 2 ओवर में भी काफी कुछ बदल सकते हैं माहौल उनके खेमे में। उन्होंने कर दिखाया है, पिछले मुकाबले में 50 रन हाफ सेंचुरी लगाई थी। आज के दिन में एक इकलौते बल्लेबाज है आज के दिन में। जी हाँ, बाहर बहुत ज्यादा बाहर, दूसरी गाइडलाइन के बाहर, इसलिए वायर करा दिया अंपायर ने। हालांकि उसी सोच पर ही यह गेंदबाजी करेंगे मुझे लगता है। हालांकि स्विच हिट के लिए यहाँ पे फील्डर तैनात नहीं किया है। पूना जी को डीप कवर्स में है, लॉन्ग ऑफ के हैं, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और डीप स्क्वायर लेग में। तो क्या वो शॉट के लिए जाएंगे पूना जी, या फिर अपने आप को लेग साइड में खेलने के लिए? अच्छी स्टॉप यहाँ पे, बहुत बेहतरीन स्टॉप। कम से कम 2 रन आ सकते थे, लेकिन उसको रोका यहाँ पे अब्बू ने। तो अब जो अनुभव मिला है, जो जिस तरीके से उनको प्लेयर ऑफ द बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट से नवाजा गया है और बहुत सारे मुकाबले में बेस्ट बॉलर और प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला है, तो अब मनोबल थोड़ा सा ऊंचा हो रहा है। और कप्तान भी अब सोच रहे हैं कि हमारे एक अच्छे गेंदबाज है अबू। ये देखिए, ये भी बेहतरीन, ये भी बेहतरीन। ये लेग कटर नहीं थी, ये ऑफ कटर थी। स्विच हिट खेलने का प्रयास, और पुनाजी जैसे बल्लेबाज को बांधकर रखना उतना आसान नहीं है, बहुत ही कठिन काम है। फिलहाल उन्होंने किया है। जब एक बल्लेबाज 50 रन निकालता है पिछले मुकाबले में, तो वो काफी अपने आप को मजबूत महसूस करता है, लेकिन फिलहाल ये कुछ ऐसा नहीं होता दिख रहा। ये कैच हो सकता है, क्या अब लेंगे ये बड़ा विकेट? पुट्टी उसके नीचे और पुट्टी ने लिया है इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट लिया है अबू ने। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, और देखिए किस तरीके से ये पूरी टीम और माहौल देखिए अंदर, पता है कि ये बहुत बड़ा विकेट है। पुनाजी कलंग उठकर धीरे धीरे वापस जा रहे अपने डगआउट में। ये लेग कटर था, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, गेंद ऑन इन द स्लॉट नहीं थी, ऊपर गई, और पुट्टी तो छोड़ते नहीं है। पुट्टी और दीपक गोवा के 2 बेहतरीन फील्डर है, आसानी से लिया है कैच। और अब बैकफुट पर यहां पे आर्यन पैंथर्स 77।
बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं यहाँ पे ये मुकाबला, और साकवा के भी दर्शक जो है वो आंखें जड़ाए हैं कि एक स्ट्रॉन्ग टीम जिसे कहा जा सकता है, स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग टीम तो है, लेकिन आर्यन पैंथर 77 की टीम भी काफी मजबूत, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, किताबें जीतते हैं, चैंपियंस बनते हैं, रनर्स अप भी काफी टूर्नामेंट में बन चुके हैं इस सीजन। तो उनको परास्त करना उतना आसान नहीं होगा। अगर उनको परास्त करना है तो आपको पांचों के पांचों ओवर अच्छे डालने पड़ेंगे। जिस तरीके का काम अभी अबू ने फिलहाल किया है वो लाजवाब। ये स्विंग अक्रॉस द लाइन, पुत्ती वहां पे मौजूद, ये रबर है, रबर। ये देखिए कितना तेज, कितना सटीक थ्रो, निशाने पर। मैंने पहले ही कहा था गोवा के दो लाजवाब फील्डर है ये इनकी टीम में, दीपक पत्रो और पुट्टी, वो दोनों काफी यंग है और काफी प्रतिभावान, तो बहुत ही अच्छे और तेज फील्डर। 34 पर 3, एक गेंद बची है। ये क्या क्या ओवर है, ये क्या लाजवाब ओवर। ये देखिए ये रन आउट हो सकता है, बेहतरीन थ्रो और 2 रन निकाले। अच्छा यहां पे जो ग्राउंड किया बल्ला, उसके वजह से यहां पे बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बल्लेबाज को मिला, 2 रन मिले, लेकिन क्या शानदार ओवर यहां पे। और दाद देनी पड़ेगी अबू को, पुनः जी कलंगुटकर को चलता किया जब वो पूरे लय में थे, और अब 36 रन पर 3 विकेट 4 ओवर के समाप्ति के बाद, यानी कि आखिरी ओवर गेंदबाजी के लिए मुझे लगता है पुट्टी आएंगे। तो अब ये भी सोच होनी चाहिए कि अब गेंद जो है उतनी तेजी से बाहर नहीं जाएगा चौके और छक्के के लिए, तो जितना कम स्कोर पे रखे यहाँ पे आर्यन पैंथर 77 को उतना रखना चाहिए, क्योंकि अगर 50 के ऊपर जाता है तो उतनी आसानी नहीं होगी दूसरे इनिंग्स में, तो गेंद उतना तेजी से भागता नहीं है, और हवा में जो नमी होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है जब 5:30 और 6 बजे का वक्त होता है। तो पुत्ती आए यहाँ पे 5वीं ओवर गेंदबाजी के लिए, रोहन सालगांवकर। अच्छा शॉट, बैकफुट पंच, एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में सचिन की बेहतरीन फील्डिंग। इनके पास युवा फील्डर है, वो भी काफी मदद करता है स्ट्रॉन्ग बॉय साकवाल को। और ये 6 रन के लिए सीधा दीपक पत्रों के ऊपर से, स्लॉट में थी ये गेंद, गलती की, चूक की, और 6 रन का खामियाजा। और अभी भी इस मुकाबले में जान बची है, ये कह रहे हैं यहां पे विशान। 43 रन पर 3 विकेट। तो अब ये यहाँ पे जी हाँ वाइड करार दिया, थोड़ा सा ज्यादा एंगल यहाँ पे बहुत ज्यादा बाहर थी। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और 1-2 बड़े हिट्स लगते हैं, 55 के आसपास ये स्कोर जाता है, तो दूसरी इनिंग्स में भी वो चेज करना उतना आसान नहीं होगा, तो वो कम से कम रन में यहाँ पे रोकना पड़ेगा पुत्ती और उनकी टीम को। ये देखिए ये विशांत का जलवा है, दूसरा छक्का आता हुआ इस ओवर से, तो ये स्लॉट में गिरी हुई गेंद, विशांत अब चमक रहे हैं इस मैदान पर। 50 का आंकड़ा
छू लिया यहाँ पे आर्यन पैंथर 77 में। 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर, अभी भी 3 गेंदे बाकी। तो जब पुनाजी कर नहीं चले तो विशांत कह रहे हैं यहां पे मैं अपनी टीम को अच्छे स्कोर तक लेके जाऊंगा। 50 पर 3 गेंदे बाकी। और विशांत बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पे बड़े हिट्स लगाने में सक्षम। थोड़ी सी चूक यहां पे करते हैं फुत्ती। ये बेहतरीन गेंद, ये वाइड यॉर्कर और स्ट्राइक पर लेना पसंद करेंगे। रन आउट हो सकता है। अच्छा थ्रो, क्या थ्रो है, क्या खूबसूरत थ्रो, सीधा हाथ में। कौन है वो वहां पे, मुझे लगता है दिलीप लामाणी वहां पे थे। ये भी अच्छे फील्डर, क्या सटीक थ्रो था। ऐसा थ्रो मतलब विकेट कीपर के लिए तो मौज ही मौज है, कुछ करना नहीं पड़ता है, सीधा सिर्फ लेना पड़ता है। और आसानी से किया अभी यहाँ पे रियाज ने। तो विशांत जाते हुए वापस, स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन, 2 गेंदे बाकी। ओमकार आए हैं अब मैदान में। तो ये पिछले 2 मुकाबले में अवेलेबल नहीं थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपने आप को यहाँ पे मौका मिला है। 2 गेंदे, हीरो भी बन सकते हैं, एक छक्का भी लगाते हैं तो टीम के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। तो देखेंगे यहाँ पे कि आखिरी 2 गेंद पर क्या करते हैं यहाँ पे ओमकार। 51 रन उतना कम स्कोर नहीं है, उतना बड़ा भी नहीं है, डिफेंड किया जा सकता है इस टोटल को। ये आउट, जी हाँ, और स्लो लेकर डाला था, अक्रॉस द लाइन खेला था, लीडिंग एज, और यहाँ पे विकेट कीपर की चोट चुप नहीं, आए और गए। यहाँ पे कुछ मुझे लगता है किसी को तकलीफ ही नहीं की और एक ही गेंद खेले और आउट। 51 रन पर 5। तो 51 पर 5 और ये आखिरी ओवर यहां पे। तो अब आखिरी गेंद, अनिकेत स्विंग एंड मिस, और इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति और आउट होंगे अनिकेत नॉन स्ट्राइकर की छोर पर। 1 रन चुराने का प्रयास, लेकिन कोई भी मौका नहीं था, सीधा विकेट कीपर के हाथ में थी गेंद। और इसी के साथ इस इनिंग्स की समाप्ति। मुझे लगता है बेहतरीन प्रदर्शन गेंदबाजों द्वारा, जिस तरीके से पहले मुकाबले में की थी उसी तरीके की यहाँ पे गेंदबाजी, लेकिन एक बड़े अच्छे टीम के साथ, बढ़िया टीम के साथ ये गेंदबाजी का प्रदर्शन। तो मुझे लगता है अगर तीनों मुकाबले देखें तो ये जो है आधा जो फासला ये तय कर चुका है सेमीफाइनल का, अब आधा फासला बाकी है। क्या होगा इस अगले 5 ओवर में, कौन जीतेगा ये बाजी और कौन प्रवेश करेगा सेमीफाइनल में। 51 रन खड़े किए हैं यहाँ पे आर्यन पैंथर 77 ने, 52 रनों की जरूरत, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो लगभग 6 बजे का समय हो चुका है और देखना चाहेंगे कि गेंद ज्यादा बाहर जाएगी 6 रन के लिए या नहीं, क्योंकि नमी जो है वो थोड़ी सी कम है अभी।
आमचे कितें आसा आमी मरे गेमींग पळयता आमचे लक्ष ना कोण काडटा ते So this is a quarterfinal which has been played between R and Panther 77 now. First Nara was Isai. Strong boys of Sakwari. So the target is 52 and 105 was for the winners to get a chance to enter into the semis. The winners of the team will be directly qualified for the semis. So Riyaz and Deepak are the two openers. The strong boys of Sakwari ready to face the target of 52. So Rohan Sagar will start the first power play over. 52 is the target to become the first semi-finalist of this tournament, which is organized by Siravana Sports and Cultural Club in association with Mr. Mithun Vaid. Give the first ball to Riyaz. The first ball nicely played. So dot ball. The match starts with the dot ball. Riyaz and Deepak. पहिलाच बॉल डॉट Oh, nicely rocker length. But still the ball has been placed into the long on area for just a single. So the inning starts with the singles. So moves on to altogether the required 52. Allotted 5 overs to become the first finalist of this tournament. Deepak is a batsman on strike. He'll be facing first time to Rohan. Oh, what ball kept very low and nearly nice collected by the wicket keeper, Mr. Ponaji. Score remains on 1 after completion of half the over. Again trying to hit it. Super piece of bowling from Mr. Rohan, very experienced. In continuous 4 dot balls, he has been given just 1 run. This type of bowling has been required. Again. Oh, appeal for caught. And yes, he has been given out. As the ball stuck onto his boot. As a result, he has been given out. So first wicket down. Our strong boys of Sakwari, that is Deepak, has been back into the pavilion. He has been caught and bowled by Mr. Rohan. बुटांक लागला म्हणटा न्ही तो पळोवया तो म्हणटा तेजे शुजाचेर गेला कशें कळटलें
बॅट्समॅन कोण आहे तो? Sonu Bhutti is a new batsman. So just one run and they've been lost their first wicket. Oh, Yorker length. Slightly with a very good piece of fielding, but unable to stop making this one run. So after completion of first over, a very good over from Rohan. Just given 2 runs and taken a marvelous wicket of Deepak. So now in remaining 4 overs, they will require 50 runs at average of 12.5 runs per over. It is not an easy task. And both the teams, they know the importance of this match. As the winners will be directly qualified for the semis. कोणतो? नामदेव कॅप्टन. So Namdev will bowl the second over, the captain of the team. And batsman strike is Sonu Bhutti. मनोज. ओके. Good one. The chance of run out. If it could be just one run. If it could have been hit directly into the wicket, then the decision will be turned something else. So just one run came in this first delivery of the second over. And all moves on to 3. And Riaz, and this time in between the gap. Long chase for the fielder. And I think it's a boundary. 1 bounce boundary. And yes, it's a boundary. So it moves on to 7. Oh, this time a big shot. A big one. A huge 6 from. So now they have been crossed out of a figure. Moves on to 13. A very good shot. Taken full benefit of his height by Mr. Riaz. Superb nicely connection of bat and ball as a result is some big shot from a big man. So moves on to 13. So just 2 runs has been come in the first over. Already 11 runs has been given in this second over. Still is in progress. Oh, what a superb piece of bowling. Nicely come back after hitting a 6 in the previous ball. Score remains on 13. Again a lofted, and this time also a big one. A super piece of hitting by Mr. Riaz. 2 sixes in this over, and total moves on to 19. This type of big shots have been required. Already 17 runs has been came in this over.
but this time slightly placed for just a single. It total moves on to 20. So after completion of 2 overs, an average of 10 runs per over is 20. Sorry, it's 20 for 1. A very good positive over. So 18 runs has been came in this over. First over 2 runs, second over 18, altogether 20. So in the remaining 3 overs, 32 has been required. An average of 10.75 per over. So this is the commencing date. This is the first day of this tournament. It is the 4th All Goa Panchayat and Municipality level tournament organized by Sri Ravana Sports and Cultural Club in association with Mr. Mithun Vaidya. Lots of beautiful prizes have been displayed along with a cash of rupees first, that is 1,77,777. Second finalist will get 77,777. Individual prizes, semi-finalist, man of the series, best batter, batsman will also be awarded. All the jerseys will be provided by the organizer. Bowler कौन? Sid is the bowler who will bowl the third over. 18 balls and 32 is the now target to become the first semi-finalist of this tournament. The first ball opted. Let's see, and it's a big one. It's a big one. And the total moves directly onto the 26. So first ball has been punished of Sid above the head of the long on area. This time into the leg side. She has one more consecutive back-to-back 2 sixes from Mr. Riaz, and total moves on to 32. Just now 20 more runs required. What a super piece of batting from the captain, that is Riaz. So with the help of 4 sixes and 1 boundary, total moves on to 32. Oh, again now nicely come back after hitting 2 sixes. The third ball has been dot. Score remains on 32. This time a full toss straight to the wheeler. Just 1 run for Riaz as well as for his team, and total moves on to 33. So 19 more runs required in the remaining balls. The strong boys to become the first semi-finalists of this tournament. Oh, this time a very good feeling over there. So just 1 run, total moves on to 34. Still third over is in progress. Ball touches into the legs. Just 1 run in the form of leg bites. So it moves on to 35. So after completion of 3 overs, is 35 for 1. So 17 more runs required in the remaining 12 balls. Very interesting match has been going on. That is pre-quarter between strong boss of Sakwa versus RM Panther 77 of Snora. So in the remaining 2 overs, that is 12 balls, 17 runs has been required. Let's see who will become the first semi-finalist of this tournament. Whether it is strong boss of Sakwa or whether it is Iron Panther 77 of Snora.
So Punaji will be bowling the second last over, that is the fourth over. Oh, first ball and made it to the square of boundary. So this over starts with a boundary and moves on to 39. What a superb start of this fourth over. It moves on to 39. So 11 balls remaining. Oh, Yorker length. A super piece of bowling by Mr. Punaji. Very experienced. All-rounder playing for Aryan Panthers, 77 of Snora. After hitting the first boundary in the first delivery, he has been nicely come back. A dot ball after that. So 10 balls remaining. Oh, this time straight to the long on. Oh, very good fielding. Oh, what a piece of running between the wickets. Easily made 2 runs. Almost to 41. A good one, and it might be, I think, it's a 6. 45. So it moves on to 47 now. So 5 runs has been required in the remaining balls. For strong boys of Sakwari. Just 5 more runs required. And this time I will push it, and it's a boundary. So match has been tied. To moves on to 51. What a super batting by the captain of the team, Mr. Riyaj. So match is tied. Just 1 runs required to become the first semi-finalist of this tournament. He's on 47. And so congratulations. So congratulations, strong boys of Sagwale, to become the first semi-finalists of this tournament. That is of day 1 by beating Aryan Panthers 77 of Asnora. And very good batting by Mr. Riyaz. On knockout 48. Knockout 48 in just 18 balls made them to easy win over Aryan Panthers 77 of Asnora. Mr. Mithun, kindly contact. Mithun, kindly contact over here.
So, with the help of 48 not out from Mr. Riyaz, the strong boys of Sakwa has been reached into the semis. So, congratulations once again. So, now request Mr. Mithun Vaid. Kindly request Mr. Mithun Vaid to hand over the man of the match. So now request Mr. Manohar Vaid to hand over the man of the match, and the man of the match goes to knockout 48, Mr. Riyaz. Please come and collect your man of the match trophy in the hands of Manohar Vaid. So congratulations Riyaz as well as for his team for reaching into the semis.